नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेल्थ फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हेल्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये ऑनलाइन शो भी प्रतिदिन काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है। हेल्थ केयर से जुड़े एक्सपर्ट्स हों या फिर आम जनता, सबको जोड़ने की हम लगातार कोशिश करते हैं। सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करना हमारा और हमारे शो का मकसद है। आज के एपिसोड में हम खान पान की बात करेंगे। खान पान का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और उससे बढ़कर क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये जान लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये अच्छी सेहत की गारंटी होगी। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाते और उल्टा सीधा खाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे देश की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और वेलनेस कोच मिस मंजरी चंद्रा से, जिनकी किताब लॉन्च हो रही है, हील विथ फूड्स, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स दैट विल चेंज योर लाइफ। उनसे विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि खान पान में मैजिकल क्या है। हमारा ये शो अगले 3 घंटे तक यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव रहेगा। तो पहले देखते हैं राउंड अप वीडियो। हेल्थ फाउंडेशन के इस अनोखे ऑनलाइन शो हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज मदर्स डे है। माँ एक छोटा शब्द लेकिन बहुत बड़ा अर्थ। माँ यानी सृष्टिकर्ता, माँ यानी जननी, माँ यानी त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति। माँ की व्याख्या कम पड़ जाएंगे, इसलिए आज के हेल्थ फॉर ऑल कार्यक्रम को हमने महिलाओं को समर्पित किया है। महिलाएं भी जन्म से पहले माँ अपने बच्चों और परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करती है और कभी कभी तो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज तक कर देती है। आज हम ये पीड़ा उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के लिए महिलाओं को स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। महिलाओं की सेहत हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या है उनकी समस्याएं और क्या है उन समस्याओं से बचाव और उनका समाधान। We are on an important day, which is Mother's Day, and on this particular occasion, session 1 will be on exercises for pregnant women. So it's very important that everybody should exercise during pregnancy. It's a very wrong myth that people in India treat pregnancy as one illness. You should not do this, you should not do that, you're pregnant. But that's absolutely a myth.
you should know how to do it when you are pregnant. Okay, so it depends a lot on how active you were before pregnancy. Okay, so your exercise therapy has to be designed according to how you were before pregnancy. So somebody who was already gymming or already running or already swimming, they will have a different exercise protocol than the person who was living a completely sedentary lifestyle. So I always say that if you are planning to conceive, then you should start doing exercises even before the idea of conceiving, because the body will be much more healthy and prepared for pregnancy. Okay, what all exercises I can do in pregnancy? You can actually do anything and everything, including weights. But that depends upon whether you were doing weights before or not. For the first trimester, since the belly has not come up, so the curvature is not a problem. Okay, so what do? You actually do stretching, lot of stretching exercises. Okay, so just to open up your body, because it's easier to exercise in the first trimester. So what you will do, maybe I will just show you. A bow pose is very, very good. So taking the leg as apart as possible, hands at the shoulder level, your right leg facing towards the wall, bend it as you breathe out, you bend it to almost 90 degrees, don't exceed beyond, you come till your toe level, okay? And one straight posture, you can look at your right hand or you can look at the front, but make sure your hand is not going down and up. It's one straight line. So you can do bow pose 1 and you can do reverse bow. So you can actually go like this, trying to open up the chest as much as possible. Keep breathing in and out. And you can even do, so the whole thing happens here also. No, we are not doing the bow to for the pregnancy, because again, we don't want to put a lot of pressure here. So this is avoidable for the first trimester. You can very well do this for the second trimester. Okay, for the second trimester you can do this, then this, and even going back and taking one leg up. And similarly, you can do Trikonasana, which is basically the triangular pose. Both legs apart, facing forward, breathe in, come up, breathe out, go down, and hold it here for 10 seconds, come back, and then hold it here. Now, of course, your holding can be even more depending on what you want to do, okay? और अब समय है हमारे चर्चित सेगमेंट योर हेल्थ काउंटर का, जिसका विषय है अस्थमा द इग्नोर्ड एपिडेमिक इन इंडिया। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे डॉक्टर जे.सी. सूरी। डॉक्टर सूरी जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन पर अच्छी पकड़ रखते हैं। भारत में फर्स्ट होलिस्टिक पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही है। वह भारत में स्लीप मेडिसिन के जनक यानी फादर ऑफ स्लीप मेडिसिन के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर सूरी से विस्तार से बातचीत करेंगे हील फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर आर शंकर। मिस्टर शंकर का जर्नलिज्म में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। वे अब तक हेल्थ राइटर्स के 200 वर्कशॉप और 7 नेशनल हेल्थ राइटर्स एंड एडिटर्स कन्वेंशन का आयोजन पिछले 5 साल में ही कर चुके हैं। मिस्टर शंकर कर्नाटका और केरला से प्रकाशित न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर रह चुके हैं और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। Why is asthma considered an ignored epidemic? I think asthma is a very important disease, and you are right that it is an ignored epidemic. Why we consider asthma to be an ignored epidemic? I think to understand that it is important to know the magnitude of the problem. So if you go by the figures, about 300 million people suffer from asthma worldwide, and out of these 30 million are in India.
So you can see 10% of the total this thing is seen in India. And the other thing is that this magnitude is constantly increasing. So prevalence almost increases by 50% every 10 years. There are major issues also, like this disease is grossly underdiagnosed and undertreated. So there are issues of getting the right treatment, right diagnosis, right evaluation, so that we are not able to actually make a diagnosis in large percentage of cases because of lack of care, lack of tests like pulmonary function tests. This thing are there. If you see in children, there is a rising number of hospital admission for asthma. Now, what does this indicate? This may indicate that probably the disease is becoming more severe, or there is poor management, or the lack of access to the care, what you can say the effect of poverty. So that is a very important thing. And then, when we are talking of ignored epidemic, as you said, what is the economic impact or the financial burden of asthma? Then you will see, although in developing countries, the exact figure is not known, but wherever the data is available in developed countries, you will be surprised to know that about 1 to 2% of their annual health budget, it is spent for the management of the asthma. So you can see the importance of this disease. And there was a global initiative, the global initiative on asthma. This was a combined effort by many organizations, including WHO. It was established in 1989, and the main purpose of this GINA was to increase awareness about the prevalence of asthma, how to improve the management of this disease and reduce the burden of asthma in worldwide. And then there is so much of diversity in the healthcare systems all over the world, and the management guidelines needs to be tailored. So there are so many issues related to this, but I fully agree with you that this is an ignored epidemic because the number of patients, the lack of proper diagnosis, and its morbidity and economical impact. All these things point that we need to pay more attention to this disease. We now move on to session 3, which is on women and wellness. महिलाओं में एनीमिया पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। अभी क्या स्थिति है देश की? सो बेसिकली जैसे हम सभी जानते हैं कि अनीमिया जो एक प्रॉब्लम है वो रेड ब्लड सेल्स की कमी से हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है बॉडी की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फटीग, वीकनेस एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस, कॉग्निटिव मोटर डेवलपमेंट फेस करने पड़ते हैं वेरियस एज ग्रुप्स में। सो बहुत सारे नेशनल सर्वेज हैं हमारी कंट्री में जो बताते हैं कि अभी करंटली अनीमिया का क्या कंडीशन है। एंड अगर मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज की बात करूँ जो रिसेंटली रिलीज हुआ है 2019-20 में, जिसमें डेटा में दिखाया गया कि 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हमारे कवर किया है, तो उसमें प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आई है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस डेटा हमें मिला था अनीमिया का। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि बच्चों के बीच में जो अंडर 5 चिल्ड्रन है उसमें प्रेवलेंस अराउंड 67% है, पहले के मुताबिक 8% तक बढ़ गई है। प्रेग्नेंट औरत की बात करें तो 52% तक अनीमिया हो चुका है, जो पहले से भी बढ़ चुका है। देन हम WRA वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बारे में बात करें तो वो भी बढ़ गया है, 57% तक हो गया है। एंड एडोलेसेंट गर्ल ऑल्सो, जिनमें अराउंड 59% तक अनीमिया है। सो बेसिकली अगर नेशनल स्टैटिस्टिक्स को हम देखें और ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सो ये मोर देन 30 ईयर्स से आ रहे हैं हमारे पास सर्वेज, हर डिकेड के बाद आते हैं। अभी 5 साल के बाद ये सर्वे लॉन्च हुआ है जिसमें प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया काफ़ी हाई है, सारे बेनिफिशियरी ग्रुप्स मोर देन 50% है। एंड अगर हम एक और सर्वे की बात करें, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे CNNS सर्वे आया था 2016-18 का, उसमें केवल बच्चों का प्रेवलेंस अनीमिया का बताया गया था। तो उसमें भी हम देखें तो प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया स्पेसिफिकली न्यूट्रिशनल कॉज जो है कि
अनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं, पर वन ऑफ द कॉज इज न्यूट्रिशनल कॉज। उसमें भी बड़ा हाई प्रेवलेंस बताया गया, अराउंड 67% तक प्रेवलेंस बताया गया था 1 से 4 साल के बच्चों में। उसके बाद 5 से 9 साल के बच्चों में प्रेवलेंस मोर देन 60 था। तो बेसिकली सारे जितने भी हमारे नेशनल सर्वेज हैं उनमें प्रेवलेंस जो है काफी हाई है बेनिफिशियरी ग्रुप्स में, एंड उसी के हिसाब से प्रोग्राम्स और इंटरवेंशंस बनाई गई हैं देन हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। Dr. Sonalika, you mentioned about early pregnancy and late pregnancy. Yes. Now, there is a tendency in double income group couples to freeze the egg and have a child at a much later stage. Yes, sir. So, does this in any way affect the child physically and psychologically? Sir, exactly. There are not much complications we have noticed in that, because nowadays the screening tests are very helpful. So we detect it at very early stage as we come to Down syndrome screening, sir, which is a common complication in a late pregnancy, especially with this freezing the eggs and getting it in the fertilization later. So Down syndrome is something which we have seen in these babies, but not very frequently, honestly. So at our 12 weeks, that is in the third month only, we do the Down syndrome screening for the babies. We do the ultrasound, we do the blood test. So that actually gives us a good report that whether the baby is having some kind of mental problem or some. And then after the Down screening comes the quadruple marker test, sir. So these are the screening tests which we regularly perform in all the patients, especially in the late marriages. That is after 30 and 35 years of age when a woman is getting pregnant. So yes, definitely you are right, sir. These late fertilizations and late marriages, these all constitute to the baby growth. It does affect the baby growth, but with regular antenatal visits, with regular checkups, with regular screenings, and with regular medicines and supplementations, these things can be avoided. These things definitely can be avoided. Some states in India have fared badly in outcomes linked to health, nutrition, and cognitive growth of children in 0 to 6 years of age group based on analysis of public data from 2005-06 and 2015-16. And overall figure is also not very impressive. What's your comment on this? Yes. So basically, the nutritional status of the pregnant woman and lactating woman, as you state, first 1,000 days are important. And I would rather say that first, before 1,000 days, I will say that the 200 days before conception is also important, and we have to focus on that period, that is preconception period. And during that preconception period, if we work on the attaining the normal PMF for woman who is desiring pregnancy, if we focus on the anemia correction, that is before the conception. If you focus on the as we know that various factors are associated with poor outcome after the pregnancy. Instead of first 1,000 days, I would rather say we have to focus on the first 1,200 days, and in that period we have to give more importance to the nutritional status and of the woman, and we have to focus on the behavior change in doing BCC activities, so we can work on these chronic diseases in that preconception period. And this preconception care model have to be applied at national level, so that we can improve the health condition of the woman who is desiring the pregnancy. And if we work on that, the health and nutritional status of the pregnant woman will improve, and it will affect the then there will be low prevalence of the stillbirth. There will be low prevalence of the under 5 mortality. कोविड के दौरान पेरेंटिंग के लिए क्या चुनौतियां रही? जी, पहली चुनौती तो ये थी कि मेरी बेटी पहले से ही स्कूल नहीं जा रही थी, सो उसका सारा जो सोशल इंटरेक्शन था वो फ्री प्ले से ही आता था। तो जब लॉकडाउन हुआ पहली बार, तो पूरे समय उसको घर पे रखना और गेनफुली एंगेज करना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। पहला चैलेंज तो वो था। उस टाइम पे वो 8 साल की थी, तो शी वाज नॉट हैविंग द गैजेट्स
अभी तो सारे बच्चे सब गैजेट से ही चिपके हुए हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट उस टाइम पे शी डिड नॉट हैव दोज टूल्स टू कीप हरसेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटीज इजाद करना जिससे कि वो ऑक्यूपाइड रहे, तो वो चुनौती मेरे लिए थी। दूसरा ये कि she started saying for the first time that she feels lonely. So उन्होंने एक presentation बनाया जिसमें she spoke about 10 reasons why she should get a dog. ये presentation बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक्चुअली बाद में पब्लिश हुआ था। चुनौतियाँ तो बहुत सारे हमें फिर ऑनलाइन हॉबीज क्लासेस समर कैंप क्योंकि नहीं हो पा रहे थे। So same challenges as I think every parent in the country and around the world faced at that time, but मेरे ख्याल से mental health of children was a big issue at that time. What is the most pressing challenge post-COVID, especially in your state, Chhattisgarh? So we are still dealing with the challenges that a lot of people in the fringes of the forests, they're still unvaccinated. And it is difficult to convince them to get vaccinated as they are the people who are living in the forest and who do not get convinced. And honestly speaking, there is a huge Naxalite belt in Chhattisgarh where they are asked by the Naxalite leaders to not get vaccinated, and that makes it more difficult to reach out to them. But if you're talking in general about the women's health here post-COVID, then I think the health systems were quite severed at that time. The COVID had shut down everything for the normal people, and then one of the things that we started seeing is that the violence against women that also shot up, and it was something that now the victims were living with their perpetrators. And it has been difficult, and I would say that it has not only been seen in Chhattisgarh. Within the first week of the pandemic, there were about 92,000 calls on child helpline to seek help. 92,000 reported calls in a first week. So post-COVID, these things which shot up was that suddenly people were finding it difficult to settle down in the new normal. और अब वक्त है योर हेल्थ काउंटर का, जिसका विषय है प्रायोरिटाइजिंग एडोलेसेंट्स हेल्थ इन पोस्ट कोविड टाइम्स। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमा दिवाकर, जो देश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बातचीत करेंगे हील फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर आर शंकर। और अब वक्त है योर हेल्थ काउंटर का, जिसका विषय है प्रायोरिटाइजिंग एडोलेसेंट हेल्थ इन पोस्ट कोविड टाइम्स। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमा दिवाकर। डॉक्टर हेमा इंडिया की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट में से हैं, जो बेंगलुरु के दिवाकर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं। देश विदेश में इनका बड़ा स्थान है। वह ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फेडरेशन की अध्यक्ष भी हैं।
डॉक्टर हेमा दिवाकर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हैं, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, जो भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है। मिस्टर शंकर बात करेंगे हेमा दिवाकर जी से। मिस्टर आर शंकर हील फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। उनका जर्नलिज्म में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। वे अब तक हेल्थ राइटर्स के 200 वर्कशॉप और 7 नेशनल हेल्थ राइटर्स एंड एडिटर्स कन्वेंशन का आयोजन पिछले 5 साल में कर चुके हैं। मिस्टर शंकर कर्नाटका और केरला से प्रकाशित न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर रह चुके हैं। The topic is prioritizing adolescent health in post-COVID times. Can you distinguish the health issues in adolescents before COVID, during COVID, and after COVID? What are the differences that adolescents went through this critical phase of 2 years? When we say post-COVID, I think a lot of things that were always existing and always needed our attention were in the backyard, and the COVID has brought it and slammed it on our face, so to say. So we recognize the importance of so many things that we ought to have done at the appropriate times, because for adolescents, as the adage goes, you reap as you sow. So you sow the seeds of good health in them, preventive care in them, then they grow up into fine, healthy individuals which make a healthy country. So the pre and post-COVID has allowed us to make this distinction of really recognizing the importance of health as well. And to my mind, the 5-point program that we always ought to have initiated for the adolescents, catch them young, that is actually the mantra. So the 5 things, one which COVID has brought to the forefront is for all age groups about nutrition and building up your immunity. So the right nutrition, especially in the adolescents, in the growing up years, avoiding anemia and stunted growth, that's one of the prime crucial things. The second is, so the lifestyle changes, inculcation of the habit of exercise and doing away with the sedentary life pattern and diminishing the incidence of obesity. That's the second important thing. The third thing is, for girls, what happens, especially in adolescence, is the onset of menstruation. Of course, the other secondary sexual changes do happen and happens by default, but one thing that strikes everybody's eyes is the menstruation. So menstrual health and hygiene forms the third important prong. And the fourth is all about vaccines. COVID has brought the vaccine to the forefront, which has made us reflect, well, there are many other vaccines beyond the COVID vaccines, which our adolescents should have got, especially the girls with respect to cancer cervix, the HPV vaccines, etc. So more attention and more focus is now getting on to that. The life skills and the awareness about sexuality, the sexual behavior, contraception, and mental health. So these 5 points, if you really focus, pay attention to something to make an impact, I think the entire phase of the health of the country as such will change with respect to the next generations. The key is the adolescent care to build up a good foundation for the future. Don't miss the bus is what we always say. Act at the right time for a better yield, a better impact, and a better tomorrow. Teen and child marriages became rampant during the COVID lockdown, especially in rural areas. Exodus of migrant workers from big cities and towns, their struggle for livelihood, protracted closure of schools, and anxiety in poor communities about their children's immediate future were among the most contributing factors that led to child marriages. And since attendance in marriage functions was restricted to 20 or less, parents could hoodwink the law. Now, what are the health issues that these unfortunate girls would face post-COVID, and what are the remedies? See, actually, as medical professionals, we often tend to ignore the societal structure and the cultural backgrounds. For us, oftentimes, maybe because of the volumes, maybe because of busy schedules, maybe because we are so engulfed in managing complications, etc., these social fiber and what impact it may have about the girls' and women's health often gets ignored. And especially in low middle income countries like India, the rural, where the girls and the women themselves are not empowered to make their own decisions. So anything else
that comes their way, they have to quietly accept it. So having said that, yes, everything has escalated. Everything that is wrong has escalated during COVID times, inclusive of the 30-35% increase in stress and mental health disorders, and so many people needing the psychiatrist's visit and psychological counseling, but also quietly, secretively, as you said, the early marriages. Why have we brought in a law for the minimal age of marriage? Because it has huge implications, and the school dropouts, when it happens, even in the yesteryears, we had recognized that unless the girl continues her education beyond the 10th, 12th, she will be trapped into early marriage. So dropping out of schools was one of the primary prongs of, containing the early marriage issues, so that she's educated, she moves out probably into her career and employment and the economic empowerment that she has to make her own decisions. That's a huge thing in itself. As we speak today, 15 to 19 years, that is where the secrecy is there. Many times they'll manipulate the age also and then get them into marriage. So when the body, mind is still under the phase of development, neither physically nor mentally, they are prepared to get into either marriage or childbirth. So the contraception again is not in the forefront. The unmet need for contraception is huge, and that's why we have as many as 15 million unintended pregnancies as it is in our country. So early marriage, early pregnancies, and if they get pregnant and it's unintended, or they get sequentially pregnant at 15, 17 years and the second pregnancy is aborted, and septic abortions and loss of lives. The teenage pregnancies, which is a very, very special category in our branch, where the pregnancy complications and the risks of becoming a case of high blood pressure and a case of obstructed labor and the trauma and the childbirth complications and loss of lives. So COVID has really jolted and made us wake up to the situation even more, aggressively than ever before. So this is the second best chance that we're having. So let's get at it, is what I would say. What do you do with in rural areas where education is less, mothers are literate, and so do you have any program for them also where you can probably coax them to have this vaccine? Actually, we want to just, the line between rural, urban, which we have always talking, that really it's time to blur that now. Anywhere, everywhere, every time girl, women goes for care, this is non-negotiable. This has to be as uniform as possible, and either the government or the public-private partnership or the private partners in collaboration with some NGOs will have to move the needle forward. It is our responsibility, otherwise we are failing our girls and women, Mr. Shankar, because if we wait forever and forever for things to happen on their own, obviously it will not happen. We have to think out of the box and make it happen. And for that, you'll be alarmed to find out so-called educated, so-called affordable, they can access it. Still, about more than 70% in the urban areas have also not taken the HPV vaccine. The gap is huge. So you ramp up from one side and then many testimonials, yes, these are taking, it is safe, it is good, etc., etc. Then even that buzz will percolate onto the less accessible areas. And if we position this as something which is really, really important for our girls and women, I think there will be many more initiatives that need to come to the forefront to cover the areas which are generally deemed to be not accessible and affordable. We have to reach out to them and make things happen. COVID left a lot of adolescents orphaned. How do you look at their future, especially the girls? Again, this is a social factor which will definitely impact a pocket of the generation next. But coming to think of the reality, the parents in the COVID era were also so stressed that even if the adolescent girls had the parents, the parents couldn't overcome their own stress and handle some delicate problems with the adolescents. That also we have seen.
So adolescents themselves, at least in the urban areas, and because of the social media, the YouDost, and there are many other platforms available in an anonymous and a confidential manner, the numbers have escalated massively, which means that they need help. That is for sure. And the mental health problems and challenges have really escalated, and we cannot still match the supply and demand, because the supply side of who would counsel them, how it will be appropriate, how it will be culturally relevant, and how it will get them to be in a better state of mind and body is still a huge challenge, because the workforce for reaching the adolescents with respect to all of these, even adolescents with the parents, the capacity building of this workforce to deliver some quality care to the adolescent population is a must, and we don't have a structured kind of a module developed for that. But the adolescents without parents, usually it is more the extended family structure which comes to the rescue, rather than a professional medical organization or we as doctors. And I would think it is just lip sympathy, because we really can't get in there and do more, because it is like out of the purview. And maybe one of anecdotal case, we may have helped them to connect with somewhere that they can be taken care of and placed. But it is it is a anecdotal and individual kind of experience. But as a community, yes, there is much talk about it, but where it has landed the orphaned adolescent is something that each one of them, because it is so bizarre, and it is it is a touch point which is very complex and emotionally very disturbing. But we really have to think that God is there to take care. That's the kind of a situation that we've landed up in. There is now global data indicating high levels of psychological distress among postpartum mothers during the pandemic. The rate of anxiety and depression almost doubled compared to non-COVID times. In Karnataka alone, there was this unfortunate suicide of the granddaughter of a famous politician. Now, what are your views, or what are your suggestions? I think postpartum depression, again, by itself is a very important issue in the women's healthcare space, which even in the pre-COVID era, I come back to the same sentence, that it was pushed under the carpet. Many clinicians did not have the bandwidth to even recognize it and do something about it, and each one was left to themselves. We had tied up with the NIMHANS to do a study, because the postnatal depression scores, as we call it, it's called the Edinburgh score. The questions did not relate to our mothers at all. I mean, if they were made to answer that score sheet, you wouldn't have gathered anything from there. So the NIMHANS team worked towards this special issue and brought out an Indian system of actually calibrating the depression scores for postnatal women, which we have to do for every single postnatal case. That means 30 million such forms should have been filled ideally, but the doctors group who are aware of this or who pay attention to this, etc., was dismal. But the post-COVID has brought this again as a very important issue. Now, when we speak of women's health, mental health is definitely now, included. And as we speak, the Poshan Abhiyan from the government has brought out a nutritional assessment card for the pre-pregnancy, pregnancy, and post-pregnancy. Now, Mr. Shankar, they have added in the nutritional assessment the mental assessment as well. So it has come in the government card. That means they have been sensitized enough, they've paid attention to this, the policy has changed towards paying attention and doing something about the mental health. Again, I have to underline and underscore the issue of the quality. Yes, the recognition is there, that's the first step. It has come into the card, and the private also has been sensitized, but still there is a lot more for us to do, because who is doing it, how they're doing it, is talking about it enough, what is the short-term and the long-term care that needs to be given, and overall,
mental health and anxiety, both in pregnancy and postpartum in the COVID times, has been really, really challenging for us as clinicians, because so many questions asked during pregnancy also for which we didn't have any answers. Whether my child will be growth restricted, whether they'll be malformed, can I breastfeed or not. There was a phase where we didn't have the recommendations or the directives from the government as to what we should be telling, what not, etc., because it was all in a confusing phase. And you can quite imagine the anxiety of the to-be parents in that phase where nothing was known to them and nothing was known to us either. So we've churned this issue in such a manner that now everybody has recognized that when we say the definition of wellness or health as being both physical and mental health, until today, until the post-COVID era, I do not think that the phrase of mental health wellness was taken seriously. And now we have just started paying attention to it. But at least something has to begin somewhere. So this has begun. Many have included it into a standard of care, kind of the respectful care and the mental health and well-being during pregnancy and postpartum. Postpartum depression is indeed a huge issue, and it's leading to catastrophic, endpoints where abandoning the child or abandoning her own life, etc., has brought it to the forefront. With one example from one family, as you said, to many others. So there is I think the post-COVID era has at least allowed us to loudly and clearly voice out our concerns on these matters, and everything would take time, but I think in another 5 to 10 years, it'll be a norm, like how you assess the weight, height, BMI, etc. The mental health scores also will be put down. HPV vaccination also will come. All these should become the standard of care, and it would be the standard of care sooner than later, because these were some issues which we have been struggling since the past decade and a half. But now acceleration is happening because of COVID. So I should really be thankful for that situation, which has made us all run faster than ever before. So that's a good thing. Now, I come to another issue. There are reports that infertility is growing, especially in the urban areas due to lifestyle issues, obesity. And in our last episode also, one senior doctor had said that long COVID can even affect the quality of sperms. So how far is infertility becoming a huge problem, especially among the young population? The young population is not getting married on time and conceiving on time. So the infertility is also a special bracket for the 35 plus who are into their careers, and the women are at least a small subset of them are empowered to decision make as to when they want to go in for a pregnancy. So that is fairly a significant bracket in the urban areas at least. Then there are many mushrooming centers where it's put up as a fertility center. So any young couple who thinks that they need to fast track their conception, even though they can conceive naturally, they'll rush to these centers and labeled as infertility, because once they go in there, they will get onto a bracket of treatment, at least the preliminary assessment, etc., because the mother-in-laws of the world are pressurizing them to get in quick to the reproductive phase as such. And the stress factor, I would think, is huge. And even the timed planned relations or intercourse, which we say during the ovulation time, that's been a huge challenge, and movies like Good News, etc., has brought that into the forefront. And so the reasons for recognizing that the infertility cases are increasing is also because the Asian population, the ovarian aging is earlier than the rest of the world. Originally 50 years back, we had all our mothers in the age of 20, 22, 25, where we didn't even recognize that by 30 or 32 potentially, because she's an Asian ethnicity, she can have an ovary which is aging very fast and may not have the potential to fertilize. So this is coming out as a premature ovarian insufficiency is a huge
chunk, which scientifically speaking is also the reason for enhanced numbers of infertility. And of course, the more data we have, we will know the actual trends beyond the perception that everybody has, and we will know the real reasons, and we will figure out a way to combat it. Namaskar and welcome back. Let me remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube. We have now a recorded version of a conversation with Dr. Mohit Gupta as part of your health counter. Dr. Gupta is Professor of Cardiology in GB Pant Hospital, and the topic is long COVID syndrome and the heart. Over to your health counter. और अब वक्त है हमारे एक्सक्लूसिव सेगमेंट योर हेल्थ काउंटर का, जिसमें आज का टॉपिक है लॉन्ग कोविड सिंड्रोम एंड हार्ट। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता। प्रोफेसर मोहित गुप्ता जीबी पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी 2018 से सम्मानित किया गया है। जेनेटिक्स में उत्कृष्ट रिसर्च के लिए डॉक्टर गुप्ता को 2018 के लिए ही वाइस प्रेसिडेंट द्वारा बिशन स्वरूप यंग साइंटिस्ट ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गुप्ता से विस्तृत बातचीत करेंगे हील फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर आर शंकर। मिस्टर शंकर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनका जर्नलिज्म में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। वह केरला और कर्नाटका के न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर रह चुके हैं। उनके नाम 200 से ज्यादा हेल्थ राइटर्स वर्कशॉप और 7 नेशनल हेल्थ राइटर्स एंड एडिटर्स कन्वेंशन का आयोजन उनके नाम दर्ज है। What is long COVID and how and why it affects the heart and the vulnerable segments? कोविड एक ऐसी चीज है जो आज प्रैक्टिकली एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डे इन एंड आउट, और ऐसा लगता है कि कभी ये चला जाता है, कभी आ जाता है, बट वी मस्ट बी अवेयर कि जो कोविड आज हमारे मरीजों को, हमारे कई लोगों को अफेक्ट करके गया है, उसका हार्ट के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव हुए हैं। तो आज इस यात्रा को मैं बहुत सिंपल 10 क्वेश्चंस के द्वारा स्पष्ट करूंगा।
और आप में से जो जो लोग आज इस यात्रा पर जुड़े हैं उनको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स हमको लेने हैं, कोविड हमारे हार्ट पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है और किस तरीके से हम इन चीजों से बच सकते हैं। आज अगर आप देखें तो कोविड ने हमारे जीवन में फियर, पैनिक, वरी एंड अनसर्टेनिटी, इन 4 चीजों को बहुत पावरफुल रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डाला है। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डरा हुआ है। आज देखिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भय के अंदर है कि कल क्या होगा। मैं भी कभी जाता हूं तो हर कोई ये पूछता है कि डॉक्टर साहब आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि कोविड की वेव कैसे आएगी। लेकिन एक बात आप जरूर समझकर चलिए कि जहां कोविड हमारी 1% पॉपुलेशन पर असर डालता है, वहां कोविड का भय आज भी हमारी 90% से ऊपर पॉपुलेशन पर गहरा असर डाल रहा है और उसको भी डील करना उतना ही आवश्यक है जितना हम कोविड को डील करते हैं। तो आज इसके संबंधित जो भी मिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर मैं आज प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो आज हमारे सामने उठता है, द फर्स्ट वन इज कि अगर मुझे कोविड हुआ है देन शुड आई फॉलो अप विद अ कार्डियोलॉजिस्ट। क्या मुझे किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है? मुझे कोई कार्डियक मैनिफेस्टेशन नहीं? इसका उत्तर साफ है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा कि अगर ऐसा है तो क्यों? क्योंकि कोविड का हमारे शरीर के हर अंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप देखिए इस स्लाइड के द्वारा स्पष्ट है कि कोविड हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे नर्वस सिस्टम को, मेटाबॉलिक सिस्टम को, पेट के सिस्टम को, जीआई सिस्टम, रेस्पिरेटरी, हर चीज पर एक गहरा प्रभाव डालता है। और यही नहीं, अगर हम हार्ट के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करें तो हार्ट के ऊपर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और धड़कन जैसी चीजों पर वो गहरा असर डालता है। अब आप इस डायग्राम के द्वारा बड़े सहज रूप से समझिए। देखिए हार्ट में 3 प्रकार की एंटिटीज होती हैं जो हमारे हार्ट को सक्षम बनाती हैं जीवन को चलाने के लिए। एक होता है हार्ट की मसल, दूसरी होती है हार्ट के ऊपर आर्टरीज और तीसरी होती है हार्ट के अंदर रहने वाली जो प्रैक्टिकल हमारे वॉल्व्स हैं और हमारे पर्टिकुलर अलग प्रकार के वो प्रणालियां हैं जो हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड हमारे हार्ट की आर्टरीज पर भी असर डाल सकता है जिसके द्वारा वो हार्ट अटैक करेगा। हमारी हार्ट की आर्टरीज के अंदर वो इन्फ्लेमेशन पैदा करके वास्कुलाइटिस भी कर सकता है और यही नहीं, हार्ट के मसल के ऊपर भी गहरा प्रभाव डालता है। हार्ट के अराउंड जो झिल्ली होती है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, उस पेरिकार्डियम पर भी कोविड गहरा असर डाल सकता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि लॉन्ग हॉल कोविड क्या है? मरीज आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब अब मैं कोविड से बिल्कुल रिकवर्ड हूं, लेकिन लॉन्ग हॉल कोविड उसे कहा जाता है जब पेशेंट्स जो हैं वो 4 हफ्ते से भी ज्यादा रिकवरी के बाद कोविड के सिम्टम्स को अनुभव करते हैं। और लॉन्ग हॉल कोविड में 2 ऑर्गन जो स्पेशली अफेक्टेड होते हैं वो है हार्ट और लंग्स। ज्यादातर ये उन लोगों में देखा जाता है जिनके ऊपर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और हार्ट अटैक या हार्ट जैसी कोई पुरानी बीमारियां हैं, उन लोगों के अंदर ये मैनिफेस्टेशन ज्यादा होती है। खुशी की बात यह है कि ज्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये अपने आप रिकवर कर जाता है, बट कई बारी इसके सिम्टम्स बहुत परेशान करते हैं। मेरे पास कई मरीज हैं जो 6-6 महीने बाद भी ऐसे सिम्टम्स के साथ आते हैं जो उनको परेशान करते रहते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज है या नहीं। तो लॉन्ग हॉल कोविड तभी है व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स 4 वीक्स आफ्टर द इनिशियल कोविड इन्फेक्शन। व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग कोविड? मुझे कैसे पता लगेगा कि कोविड के बाद भी मुझे कई सिम्टम्स हैं? कई लोगों को आप देखेंगे कि 4 हफ्ते बाद भी उनको फटीगेबिलिटी है, बल्कि 4 हफ्ते नहीं, कई लोगों को 4-4, 5-5 महीने बाद भी लैक ऑफ एनर्जी, इजी फटीगेबिलिटी है। उनके अंदर ऐसा लगता है कि उनको बार बार छाती में दर्द है, हैवीनेस है, पसीना बहुत आता है, धड़कन बहुत होती है, उनका सांस फूलता है, नींद प्रॉपर नहीं आती और साथ में मेमोरी इश्यूज हैं, मन के संकल्पों के अंदर भी संयम नहीं है। ये सारी बातें पॉइंट करती हैं कि लॉन्ग हॉल कोविड की मैनिफेस्टेशंस उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं हो सकती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारे सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हैं और क्योंकि ये सारे सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हैं इसलिए इनका होना जरूरी ये शो नहीं करता है कि जरूरी है कि हमको लॉन्ग हॉल कोविड है। चौथा प्रश्न आज हमारे सामने ये होता है कि यदि आज हमको कोविड हुआ है तो हमारे हार्ट पर किस प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं? मैं कोविड से रिकवर्ड, एब्सोल्युटली, मुझे 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मेरे हार्ट पर कोई गहरा असर कोविड छोड़कर गया है? इसको मैं बहुत सहज रूप से आपको समझाता हूं। कोविड हमारे हार्ट की मसल को डैमेज कर सकता है। दूसरा,
कोविड हमारी हार्ट की आर्टरीज के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है, अर्थात हार्ट की आर्टरीज के अंदर जो चर्बी जमी होती है, जो लिपिड जमा होता है, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करके उस आर्टरी के अंदर उस लिपिड प्लाक को बर्स्ट कर सकता है, जिसके द्वारा हार्ट अटैक या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम किसी मरीज को हो सकता है। ऐसे बहुत मरीज हमने देखे हैं, आपने भी सुना होगा कि कोविड के टाइम में हार्ट अटैक की परसेंटेज सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो। इसी प्रकार कोविड हार्ट की धड़कन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। 90% मरीज जो मेरे पास आए हैं उनको यही परेशानी है कि उनकी धड़कन बहुत तेज चल रही है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप में से कई दर्शक ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने इन सिम्टम के कारण अपना होल्टर, अपनी कितनी इन्वेस्टिगेशन कई डॉक्टरों को दिखा ली, और वो लोग बड़े बड़े बंडल्स लेकर आते हैं, और मैं मुस्कुराकर उन्हें यही कहता हूं कि आप इसको टाइम दीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और कभी कभी हार्ट रिदम के अंदर उनकी धड़कन कम भी हो जाती है, इसके कारण उनको कभी कभी पेसमेकर भी एडवाइस कर दिया जाता है। अगर ज्यादातर ब्रैडिकार्डिया यानी धड़कन सिग्निफिकेंटली कम ना हो, सिम्टोमेटिक ना हो, तो वेट एंड वॉच पॉलिसी ऐसे केसेस में ज्यादा बेटर है, क्योंकि 90% केसेस में ये रिकवरेबल होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं मैकेनिक्स में ना जाकर, बायोकेमिस्ट्री में ना जाकर केवल एक शब्द में समराइज करूंगा, वो है इन्फ्लेमेशन। क्योंकि वायरस अंदर बॉडी के अंदर जाके हर जगह इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। वो इन्फ्लेमेशन जो है वो हर ऑर्गन के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स प्रोड्यूस करके उस ऑर्गन को डैमेज करती है, जिसको हम लोग कभी कभी ऑटो इम्यून फिनोमेना भी कहते हैं। और जितना सिवियर कोविड किसी व्यक्ति को रहा होगा, उतने चांसेस हार्ट की बीमारियां या लंग के ऊपर इफेक्ट या बाकी मैनिफेस्टेशंस होने के ज्यादा होते हैं। 5वां प्रश्न होता है कि क्या हार्ट अटैक आफ्टर कोविड इंक्रीज हो सकता है? मैंने अभी इसका उत्तर दिया आपको, जिसका उत्तर है बिल्कुल यस। अब आप देखिए इस डायग्राम को दोबारा, बहुत सिंपल रूप से इस डायग्राम को देखिए कि ये हमारी आर्टरी है। अब एक व्यक्ति उम्र के साथ ही उसकी आर्टरी के अंदर कहीं ना कहीं ये लिपिड जमता रहता है। आप देख रहे हैं लिपिड है, येलो है, चर्बी है, और अंदर ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जिसको मैक्रोफेजेस कहते हैं। अब ये रप्चर कब? इसके रप्चर होने के 3 या 4 कारण होते हैं। जिसका मेजर कारण होता है वो है एक्यूट स्ट्रेस। डिस्टेबलाइज होने का मेजर कारण होता है एक्यूट स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस मानसिक स्ट्रेस भी हो सकता है, जैसे एंगर है, साइकोसोशल स्ट्रेस है, जो आज के समय पर बहुत रहता है। लेकिन जब कोविड आता है, वो कैटेकोलामीन्स और सीआरपीए इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स को इंक्रीज करता है, और ये प्लाक को रप्चर कर देते हैं, आप देख रहे हैं, और रप्चर करके ये हमारी आर्टरी को अक्लूड कर देता है, डिस्टेबलाइज कर देता है, और इसके कारण हार्ट अटैक हो जाता है। इसी प्रकार जब कोविड होता है तो हमारी ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, और डिमांड और सप्लाई मिसमैच होने के कारण भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अपने लाइफस्टाइल को हम बिल्कुल एप्रोप्रिएट रखें। हमारे सामने जो छठा प्रश्न आता है वो ये आता है कि क्या कोविड हमारे हार्ट मसल की पंपिंग को भी अफेक्ट कर सकता है? इसका आंसर भी है यस, क्लिनिकली भी और सब क्लिनिकली भी। ये कैसे होता है? अगेन इन्फ्लेमेशन के द्वारा, जैसे वो आर्टरीज को अफेक्ट कर रहा है, इसी प्रकार ये जो हार्ट आपका पंप करता है, ये जो मसल धड़कती है, पंप करती है, इस मसल के अंदर वो डायरेक्टली जाकर वायरस डैमेज प्रोड्यूस करता है, और वो उस हार्ट मसल को की पंपिंग को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है, जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। कार्डियो यानी हार्ट, मायो यानी मसल, और पैथी यानी उसकी इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन जब उसकी हो जाएगी, उसके अंदर नहीं होगी कैपेबिलिटी, तो वो पंप नहीं कर पाएगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यदि कोई व्यक्ति दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते उसके पाँव में स्प्रेन आ जाता है, तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना भाई मसल स्प्रेन हो गया है, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, तो मुझे आराम की जरूरत है। इसी प्रकार कोविड जो है हमारी हार्ट की मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है, और वो मसल जो है प्रॉपरली पंप नहीं कर पाती, इसलिए ऐसे लोगों को हार्ट फेलियर हो जाता है। तो आपका अगला प्रश्न होगा कि भाई ये तो बहुत चिंता की बात है, हमको इसके लिए कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। तो इसका उत्तर यही है, ये स्टडी वही जो मैं आपको बता रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट्स में हमने की थी, 33% केसेस के अंदर सब क्लिनिकल एलवी डिसफंक्शन तब। लेकिन इसमें एक मेजर बात, जब हमने इन लोगों को 6 मंथ्स तक फॉलो किया, तो करीब 50 to 70% केसेस के अंदर ये डिसफंक्शन जो है वो रिकवर करता चला। और रिकवरी उन लोगों के अंदर जिनका माइल्ड कोविड था या मॉडरेट कोविड था, उनके अंदर रिकवरी ज्यादा बेटर थी। जो सिवियर कोविड से संक्रामित थे, उन लोगों के अंदर रिकवरी कम हुई।
इसलिए हमको कॉशियस रहना बहुत बहुत आवश्यक है, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना बहुत आवश्यक है। 7वां प्रश्न हमारे सामने आता है, जो आप में से बहुत लोगों को कभी कभी महसूस भी हुआ होगा कि हमारे कोविड के बाद हमारी धड़कन बहुत ऊपर नीचे जाती है। कभी कभी लगता है मुझे टैकीकार्डिया हो जाता है। कई लोग हमको कहते हैं कि कभी कभी हम खाना खाएंगे, बैठेंगे, कभी कभी हम कोई बात करेंगे, सडनली हार्ट की रिदम तेज हो जाएगी, और कभी कभी हमारी हार्ट की रिदम कम हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोविड कभी कभी हमारे हार्ट के जो पल्स जनरेटर्स हैं, जो साइनस नोड है, उसको भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। और ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि कुछ महीने से साल भर के बाद ये जो डिसफंक्शन है ये ग्रेजुअली सेटल हो जाता है। इसलिए इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है रीएश्योरेंस। हमारे पास कितने मरीज होते हैं जिनको मैं केवल रीएश्योर करता हूं कि भाई खाना खाने के बाद, कभी कुछ और कार्य करने के बाद टैकीकार्डिया एक नॉर्मल हो सकता है, इसको आप इग्नोर करें। तो इसलिए फीलिंग ऑफ हार्ट बीट रेगुलरली एंड रैपिडली इज वेरी कॉमन आफ्टर अ पर्सन हु हैज सफर्ड फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या होती है? ये मरीज को कभी कभी बहुत दिक्कत देगा, वो काम करने का मन नहीं करेगा, वो डिजी फील करेगा, उसको लाइट हेडेडनेस लगेगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप इन सिम्टम्स को नोट करें, लेकिन इग्नोर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप इन सिम्टम्स को रजिस्टर करेंगे, उतना ये परेशानी आपको प्रोड्यूस करता जाएगा। ये कभी कभी चेस्ट डिस्कम्फर्ट कर सकता है, और कभी कभी पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम, इसको पॉट्स कहा जाता है, ये भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये सब सेल्फ रिमिटिंग है, इसका लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी के ऊपर कोई ज्यादा मेजर इफेक्ट नहीं होता है। तो हार्ट रिदम्स में अलग अलग प्रकार की जो मैनिफेस्टेशंस हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसलिए अगर ये बहुत लॉन्ग टाइम तक सीरियस फॉर्म ऑफ हार्ट रिदम परसिस्ट करती है, तब डॉक्टर से कंसल्ट करना आपके लिए जरूरी और एप्रोप्रिएट है। 8वां प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो यह है कि व्हाट हैपेंस ऑन लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग अगर देखें, इसके हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस रिकवर वेल एंड दे रिकवर स्पॉन्टेनियसली। इस बात को नोट करिए। दैट इज वाई अगर कोविड है, आपको साल भर पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 1.5 साल पहले हुआ, रिकरेंट कोविड हुआ, 2 या 3 बारी भी हुआ, इट डज नॉट मैटर। केवल अपने कुछ प्रिकॉशंस, जिनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, उनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल रिकवर स्पॉन्टेनियसली। 9वां प्रश्न जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का? इतना समय हुआ, क्या इसका कोई इलाज की जरूरत है? मोस्ट ऑफ दीज आर सेल्फ लिमिटिंग। अगर हमको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो एंग्जियोलिटिक्स, क्लोनाज़ेपाम जैसी ड्रग्स आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो इसके लिए भी हमको प्रॉपर मेडिसिन लेना आवश्यक है। ध्यान रखिए, जिन लोगों को बेसलाइन ब्लड प्रेशर रहा है, कोविड उनके ब्लड प्रेशर पैटर्न्स के अंदर सिग्निफिकेंट वेरिएशन भी ला सकता है। कभी कभी उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज चलेगा, कभी कभी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। लेकिन इस चीज को रजिस्टर करना, इस चीज को ओवर ट्रीट करना, ये नुकसान कर सकता है। और ध्यान रखिए, ये मैनिफेस्टेशंस कभी कभी 6 महीने से साल भर, उससे ज्यादा प्रोलॉन्ग भी हो सकती है। इसलिए गिविंग टाइम इज द बेस्ट वे। Going slow in post-COVID patients is the best approach, and most important is not creating anxiety. कभी कभी मैं देखता हूँ लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं कि मेरे का ये कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। कोविड कैन प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ पैटर्न्स इन अवर लाइफ, इसलिए आपको इजी रहकर चलना बहुत आवश्यक है। लेकिन यदि धड़कन अनकंट्रोलेबल हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज चलती है, तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके प्रॉपर सिंपल मेडिसिन लेके उस धड़कन को संयम में और कंट्रोल में रख सकते हैं। 10वां प्रश्न जो हमारे सामने आता है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कोविड। अब इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसको मैं कहता हूं ABCDE अप्रोच। सबसे पहले है असेस एंड अलर्ट, दूसरा है measuring and taking care of your blood pressure, तीसरा है cholesterol assessment and cigarette cessation, चौथा है diet, diabetes and drugs, और 5वां है exercise both for the body as well as for your soul and your mind, जिसको हम लोग meditation भी कहते हैं। और इन सब के अंदर हमारा वैक्सीनेशन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आज कोविड के होते हुए सोशल मेजर्स लेना, मास्किंग रखना, ये बहुत आवश्यक है।
ये जरूरी है, भले गाइडलाइंस अभी भी कहती हैं कि आप मत पहनिए, लेकिन मेरा आप सबको रिकमेंडेशन ये जरूर रहेगा कि सिंपल 2 लेयर्ड मास्क यदि आप पहनकर चलते हैं सोशल डूज के अंदर, इंटरेक्शंस के अंदर, तो आप कोविड रिकरेंट होने के चांसेस को ऑलमोस्ट 80 to 90% कम कर सकते हैं. Is there any difference in the etiology of heart ailments post-COVID among Caucasian population and Asian population, especially Indians, since we are known to have very narrow arteries? There are 3 aspects of these questions. Number 1, जो narrow arteries का आपने बोला है, that is still under investigation. This is not yet very well proven. But heart ailments in Indian population, what I call as South Asian population, उसमें 3 चीजें बहुत different होती हैं. We are prone to get heart attacks 10 years earlier, number 1. We are prone to get heart failure significantly more. Third one, we have newer and more powerful risk factors for us. And fourth one, newer risk factors like stress and risk, they play a more important role in us. इसलिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स के अंदर एशियन पॉपुलेशन, स्पेशली साउथ एशियन एंड इंडियन पॉपुलेशन, नीड्स टू बी मोर कॉशियस. टॉकिंग अबाउट द इटियोलॉजी, कोविड जो है वो हमारी एग्जिस्टिंग इटियोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी एट अ हायर रिस्क पॉपुलेशन. तो आप समझ सकते हैं कि हमारा थ्रेशोल्ड जो है वो सिग्निफिकेंटली लो हो जाता है और चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक आर हायर. इसलिए हमारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना, जो मैंने आपको बताए थे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड लिपिड लेवल्स, पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट इज लिपिड लेवल जो हमारे हाथ में है, उनको नंबर्स और दवाइयों के द्वारा कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, ताकि हम कोविड को वो पनपने का सबस्ट्रेट ही ना दें. Etiology of inflammation, etiology of COVID is working only in 2 ways. That is direct toxic damage, and second is inflammatory and generating of autoantibodies. This is same in both the population, whether it is the Western population and the Indian population. But as Indians, we need to be more cautious and more aggressive in management of all the heart etiologies. You also spoke about plaques. Is there any evidence to show that plaques rupture early in post-COVID patients? Yes. Because it is very, very clear, the plaque morphology that has been studied. These patients में हमने inflammatory markers को study किया, जिसके अंदर interleukins level, जो normally heart attack के patient में नहीं मिलेंगे, जिनको heart attack हुआ, उनके सारे inflammatory parameters को हमने उनके biochemical parameters को उनके heart attack के parameters के साथ compare किया. And you would be surprised that those patients who had severe COVID, they had higher interleukins, they had higher interferons, they had higher CRP levels, they had a higher chances of plaque destabilization. Macrophages जो उनके अंदर small होते हैं, जो plaque destabilize करते हैं, वो significantly ज़्यादा थे उन लोगों के अंदर, and the chances of them getting heart attacks were significantly higher. So these biochemical correlations have been very well carried out. इसके लिए इकोकार्डियोग्राफी जर्नल में हमने एक सेमिनल पेपर भी पब्लिश किया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हमने सीवियर कोविड, मॉडरेट एंड माइल्ड कोविड को उनके इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स के वैल्यूज के साथ कंपेयर देते हुए हमने दिखाया है कि मोर सीवियर देन कोविड, more the severe are the higher the inflammatory parameters and higher the chances of having the heart manifestation. So all are working like a curve. But similarly, as these parameters go down, the chances of recovery are better, the chances of having a good health are better. The good news is it gradually settles down with our lifestyle and small changes. Welcome back. We now have another episode of Your Health Counter, and this time it is with Dr. JC Suri. Over to Your Health Counter.
हेल्थ काउंटर, जिसका विषय है अस्थमा द इग्नोर्ड एपिडेमिक इन इंडिया। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे डॉक्टर J.C. सूरी। डॉक्टर सूरी जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन पर अच्छी पकड़ रखते हैं। भारत में फर्स्ट होलिस्टिक पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही है। वह भारत में स्लीप मेडिसिन के जनक यानी फादर ऑफ स्लीप मेडिसिन के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर सूरी से विस्तार से बातचीत करेंगे हील फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर आर शंकर। मिस्टर शंकर का जर्नलिज्म में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। वे अब तक हेल्थ राइटर्स के 200 वर्कशॉप और 7 नेशनल हेल्थ राइटर्स एंड एडिटर्स कन्वेंशन का आयोजन पिछले 5 साल में ही कर चुके हैं। मिस्टर शंकर कर्नाटका और केरला से प्रकाशित न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर रह चुके हैं और हेल्थ के मामलों पर, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। Why is asthma considered an ignored epidemic? I think asthma is a very important disease, and you are right that it is an ignored epidemic. Why we consider asthma to be an ignored epidemic? I think to understand that it is important to know the magnitude of the problem. So if you go by the figures, about 300 million people suffer from asthma worldwide, and out of these 30 million are in India. So you can see 10% of the total this thing is seen in India. And the other thing is that this magnitude is constantly increasing. So prevalence almost increases by 50% every 10 years. And if you overall see the percentage wise in US, the prevalence of asthma is about 10%, although it may vary from place to place depending upon some local factors. It may even increase up to 20% in this thing. In some areas. In India, the figures are also quite high. Maybe the similar figures again vary from place to place. If you look into the deaths, maybe 4.5 lakh deaths occur due to asthma every year. And if you because asthma is one disease which affects both adults and children, and it is considered to be the most common chronic respiratory disease in children. Global, if you take prevalence of the disease, the morbidity means this illness associated with this, and mortality. If you look this thing in children, it has increased significantly in the last 40 years. So there are major issues also, like this disease is grossly underdiagnosed and undertreated. So there are issues of getting the right treatment, right diagnosis, right evaluation, so that we are not able to actually make a diagnosis in large percentage of cases because of lack of care, lack of tests like pulmonary function tests. This thing are there. If you see in children, there is a rising number of hospital admission for asthma. Now, what does this indicate? This may indicate that probably the disease is becoming more severe, or there is poor management, or the lack of access to the care, what you can say the effect of poverty. So that is a very important thing. And then, when we are talking of ignored epidemic, as you said, what is the economic impact or the financial burden of asthma? Then you will see, although in developing countries the exact figure is not known, but wherever the data is available in developed countries, you will be surprised to know that about 1 to 2% of their annual health budget, it is spent for the management of the asthma. So you can see the importance of this disease. And there was a global initiative, the global initiative on asthma. This was a combined effort by many organizations, including WHO. It was established in 1989, and the main purpose of this GINA was to increase awareness about the prevalence of asthma,
how to improve the management of this disease and reduce the burden of asthma in worldwide. But you will be surprised to know that because of the lack of awareness and total impact of this management, even this GINA after so many years failed to achieve its goal, even in I would say even in developed countries. So there are number of barriers which are there, to reducing this global prevalence. In fact, it has been increasing over a period of time. I think the most important are limited access to care, medication, proper diagnosis, proper evaluation, lack of prioritization as public health priority, at the level of the government. We don't have a national program on asthma, although there are now programs on, in chronic respiratory diseases, this thing. And then, there is so much of diversity in the healthcare systems all over the world, and the management guidelines needs to be tailored. So there are so many, issues related to this. But I fully agree with you that this is an ignored epidemic because the number of patients, the lack of proper diagnosis, and its morbidity and economical impact. All these things point that we need to pay more attention to this disease. And has COVID worsened the situation? See, you mean in terms of its prevalence? In asthma, increasing number of cases of asthma. See, COVID is a disease which primarily affects lungs, although the other organs are also involved. And we have seen a changing picture of COVID with each wave, and because in the second wave, in the Delta wave, we found COVID to be predominantly involving the lungs, and we had those pneumonias, acute respiratory distress, and a lot of people developed fibrosis and this thing. But in the subsequent wave, we found that it also affected breathing tubes more than the lung. We didn't have that kind of serious cases going to the hospitals, but they had a lot of cough, sputum, and their symptoms looked quite similar to what we see in asthma. So COVID-19 and asthma share a lot of symptoms, which are common, like cough, sputum, wheezing, breathlessness. So, and this was a time, COVID-19 was a time when the medical care and the facility and access was limited because of the pandemic. People were mainly confined to their homes. So it is very difficult to say because these people were not evaluated. So they were being treated as COVID-19 because of the symptoms, and there was no way to differentiate whether this is actually asthma getting worse, particularly if there is no previous history of asthma. So, because when you are saying the impact of COVID on asthma prevalence, so many of the vulnerable people may have developed asthma, because we know that coronavirus, which causes COVID-19, coronavirus is one of the important risk factors for causing exacerbation of asthma. Because coronavirus has been causing common cold, and common cold has been a very important risk factor for development as well as worsening of the asthma. So that way it may have contributed, but we don't have any systematic studies or, because of the lack of access to the care, and it might have made some impact on either making asthma worse or maybe increasing the prevalence of asthma-like symptoms. Because asthma is a disease which is diagnosed on clinical picture. We don't have any specific test that way, biopsy or for diagnosing asthma. So it's a clinical conundrum. Symptoms of like breathlessness, wheezing, cough, sputum, reversibility of symptoms. So COVID-19 also has similar symptoms. So it may have some impact, but it is difficult to say at the moment to what extent it may have affected the prevalence of COVID.
we are on Mother's Day. Coming to control asthma and pregnancy, it has been reported that not controlling asthma can cause a low oxygen supply to the baby, and that there are higher chances of premature birth, growth and development of the baby, and even low weight at birth. Premature babies may have lifelong health complications or disabilities. What's your comment on this? See, if you look into the risk factors for asthma, so of course, genetic factors are very important. So every 1/3 of all asthma patients will have a family history of somebody having asthma, maybe the parent, the father, mother, or the siblings, or maybe cousins, uncles. So asthma is a disease which runs in the families from one generation to the another generation. So family history is very strong, but which I would say 32% of the patient. But if you go into the next important risk factors, then about 18% of the people who develop asthma is those who have undergone cesarean delivery. And then a very important component, as you mentioned, about 9 to 10% of these patients who develop asthma are preterm deliveries. So if a child is born preterm, then this child will be underweight. And there are now studies which has been conducted where they have tried to see the prevalence of asthma in different birth weight categories. So in one of the studies, they found that those children whose birth weight was less than 1500 grams, their percentage of asthma in them was about 22%, as against those who were born with a birth weight of 2500. So which is about 6.7%. So you can now imagine 22 and 6, so 7, so 3 times. So practically, if a child is born preterm, particularly with low birth weight, and if this birth weight is less than 1500 grams, then the risk of this child developing asthma is 3 times more than a child who's born with a birth weight of 2500 grams. So this is a very important risk factor along with the history of cesarean delivery. So I think these are very, very important factor which you have mentioned for this thing. You're also an expert in sleep medicine. So does asthma affect the quality of sleep in people? Oh yes, definitely. Asthma can affect the quality of sleep in a number of ways. One is that when a person has asthma, and what we know that the symptoms of asthma, and if you try to see the severity of asthma over a 24-hour period, then you will see that asthma tends to be more severe during night, and that too during sleep, and even in sleep in the last part of the sleep, when we have the REM sleep. So there is a what you call circadian rhythm and factors. We see that asthma is worse in sleep. So when asthma is worse in sleep, so it is likely to disturb the sleep. And how it disturbs, it causes frequent arousals, it may cause sleep disruption, it may prevent the person going into deep sleep. And then, because if you have asthma, you have a lot of cough, sputum, so the person may have to wake up to cough and to remove secretions, to throw, spit these secretions. Then what exactly is asthma? Asthma is when your breathing tubes are swollen, when your breathing tubes are narrowed due to smooth muscle spasm. So what is happening? Our breathing tubes have muscles around it, smooth muscles, and they constrict. When they constrict, these tubes become grossly narrowed. And once they become narrowed, then you have to make a lot of effort to breathe through these narrowed breathing tubes. So when you have to breathe through the narrow tube, you have to make a lot of effort. So increasing effort to breathe wakes you up. So that's another way, that it disturbs sleep and it wakes you up. Third,
Another factor is that when your breathing tubes are swollen, when your breathing tubes are constricted, and there are a lot of secretions in the lumen of your breathing tubes, so it will cause a lot of obstruction. And when there is an obstruction, so when you breathe, so the air which we breathe is maldistributed into different part of the lung. So there is a maldistribution because of the variable involvement of these breathing tubes. Somewhere breathing tubes are more involved, somewhere breathing tubes are less involved. So the distribution of the breath which we take is not uniform in the both lungs. With the result, it may interfere in our gas exchange. Gas exchange means oxygen delivery and to the body and removal of carbon dioxide. So many of these patients, particularly if they have severe disease, their oxygen levels are low. Their carbon dioxide levels may be high. So these low oxygen levels particularly become much more lower in sleep. As I said, during sleep, there is more problem with this thing. So with the result, when the oxygen levels go down significantly, that also disturb our sleep because the body wakes you up, because body doesn't want the patient to develop dangerous levels of oxygen, means low oxygen, which can be life-threatening. So it protects in a way, because in sleep your oxygen level will go down further, and if you go to deeper sleep, it may go even further. So body, as a part of protective mechanism, will not let you go to deep sleep, or maybe wakes you up so that your oxygen level remain preserved. So at the cost of preserving the oxygen level, your sleep is compromised. So there are number of ways, asthma can affect our sleep, and it results into a lot of sleep disruption, arousal. So when you wake up in the morning, you don't feel that fresh. You don't feel, so there is a drowsiness, sleepiness, tiredness, all this fatigue, and those features of poor sleep you will find in these, and particularly in children, they may not be able to concentrate in school and have important problems in learning. And so all these things, even in driving, if you are not very attentive and your vigilance levels are low, you are more prone to get into accidents. So it has I think, tremendous impact. If you want me to speak on sleep and asthma, so we can go on and on. And yeah, this thing. I think that is a complete session by itself. Yes. Apart from hereditary and environment factors, viral infection also can cause asthma and the ILI complications. So what's your comment on that? Oh yes, viral infections are one of the very important triggers. If somebody has asthma, then infection with virus can make it worse. It can cause acute exacerbation. And now what we see that even many viral infections can actually initiate or start the development of asthma. So they may be not only exacerbating, but they may also be contributing to the development of asthma. And that's why, we are talking COVID-19, it's a coronavirus. And even before COVID, we know that coronavirus is, as when we are seeing it as a common cold, is one of the important trigger and factor which leads to development of asthma in these patients. So viral infections are very, very important infections which cause frequent worsening and these things. So have we globally been able to at least identify some of the trigger factors for asthma, and what are these trigger points? As I mentioned to you, the most important risk factor is family history, which I mentioned to you already. Then there are other things like cesarean delivery, then even feeds, the children, those who are on mixed feeds, that may also promote. Then allergic factors, pollution, which is indoor pollution and outdoor pollution. Indoor pollution particularly in houses where they don't have separate kitchen. So you must have seen in our rural part of our country, the kitchen, it's an open kitchen, and it is in continuity with the
with your main, living room, and there is many times very poor ventilation in these houses. So that is an important factor. और अब वक्त है हेल्थ नामा का। इस बार हमने बात की है कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरीत चतुर्वेदी से, और इस बार हेल्थ नामा का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ कैंसर। तो पेश है हेल्थ नामा। नमस्कार, हेल्थ नामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसर पर। कैंसर जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। क्या कारण है? क्यों हमारे देश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? क्या लक्षण हैं इस बीमारी के, और क्या ये पूरी तरह से क्योरेबल है? इस तरह के सवाल अक्सर हमारे और आपके मन में उठते रहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम आज बात करेंगे डॉक्टर हरीत चतुर्वेदी से। डॉक्टर हरीत चतुर्वेदी मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के चेयरमैन हैं। उन्होंने 2009 में ये संस्थान ज्वाइन किया और बहुत ही लगन से भारत के सबसे बड़े और बेहतरीन ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम का निर्माण किया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे देश में कैंसर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, कोई खास वजह? सो ओवरऑल आई वुड से कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक तो एज बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, उसका भी बढ़ता है। खान पान और लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से बढ़ रहा है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ इम्प्रूव किए हैं, तो उसकी वजह से पिकअप रेट इम्प्रूव किया है, एंड उसका जो अगला फॉलोआउट हम लोग देखने वाले हैं कि थोड़ा अर्ली डिटेक्शन बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इंसिडेंस बढ़ा है, नो डाउट। कुछ कैंसर्स बढ़े हैं, कुछ घटे भी हैं। बाय द वे, आपको आश्चर्य होगा जान के सर्वाइकल कैंसर बहुत कम हो गया है, जो इन्फेक्शन से होता था, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ा है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया है, ओवरी कैंसर बढ़ गया है, कोलन कैंसर ऑन द राइज है। ओरल कैंसर्स में कमी नहीं हो रही है, जबकि वो भी कम होना चाहिए बिकॉज टोबैको रेगुलेशन बढ़ रहा है। सो देयर आर पैटर्न्स, बट इफ आई हैव टू पॉइंट आउट फ्यू कॉजेज, एक इज वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गोइंग अप, एंड सेकेंड इज दैट ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत आए हैं, जिसमें लोगों का वेट गेन बढ़ा है, फैट कंजम्पशन बढ़ा है, डिलेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं, और हम लोग सबका खान पान में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट बढ़ रही है, और हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है वो कम हो रहा है। इन सब चीज़ों से फर्क पड़ा है। आपने कहा डॉक्टर साहब कि कई कैंसर्स के मामले कम भी हो रहे हैं। ब्लड कैंसर्स के मामले क्या आंकड़े हो रहे हैं? ब्लड कैंसर के बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, तो ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि लगभग जैसा था वैसे ही ज़्यादा चेंज नहीं हुई उसके ट्रेंड, बट उसके बारे में क्या एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनके कारण कैंसर होते हैं? एक्सटर्नल से भी आपका शायद मतलब है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो भी है, तो जैसे पॉल्यूशन है, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स। एक्सपोजर टू सन है, इन डिसप्रपोर्शनेट एक्सपोजर, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है कि सन बेदिंग एंड ऑल दैट, उसमें स्किन कैंसर्स बढ़ जाते हैं। बट ओवरऑल इंडस्ट्रियल टॉक्सिसिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इनका रोल है।
जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल, उस पर्सन में खान पान इज ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, टोबैको इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, सो दोज थिंग्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जो जहाँ टोबैको कंजम्पशन बढ़ता है, ओरल कैंसर, लंग कैंसर बढ़ जाता है। और खान पान से डाइट एसोसिएशन कम से कम 10 तरह के कैंसर्स का, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी है, कोलन है, जी जंक्शन है, बहुत सारे कैंसर्स हैं इनका। जहाँ फैट कंजम्पशन बढ़ा डाइट में, फाइबर कंटेंट कम हुआ, वहाँ पे इंसिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है इसमें ट्रेंड बढ़ने का। तो सब कैंसर की शुरुआत होती कैसे है? क्या मरीज को शुरू में आभास हो पाता है? अगर बायोलॉजिकल लेवल बोले तो हर पर्सन के शरीर में कुछ कार्सिनोजेनिक सेल्स होते हैं और कैंसर उसमें बन रहा होता है, लेकिन हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम, प्रोटेक्टिव सिस्टम उसको एलिमिनेट करता रहता है। एक क्रिटिकल मास आता है जबकि वो पॉइंट आता है जब वो कैंसर के सेल्स को रोक नहीं पाता इम्यून सिस्टम या बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, और वो धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को जो दिखता है उसकी बात करें तो हर चीज जो है धीमे धीमे बढ़ती है। कैंसर के सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं, वो यूनिक नहीं होते हैं। कैंसर जैसे बाकी बीमारियां वैसे ही कैंसर है सिम्टम वाइज। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें मुंह में छाले का, तो हम सबको पता है कि मुंह में ज्यादातर छाले जो है सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप हील हो जाते हैं। लेकिन कैंसर का छाला भी शुरुआत में वैसे ही लगता है। वो बात और है कि वो 2 महीने 3 महीने एक बार वो अपने को स्ट्रॉन्ग करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। 6 महीने में वो सेकेंड या थर्ड स्टेज पहुंच चुका है। सो पॉइंट इज दैट जो हम सिम्टम्स पकड़ते हैं उसमें जितना कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण जो 2 से 3 हफ्ते के बियॉन्ड रह जाए, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और प्रेफरेबली अगर जब बायोप्सी की हो तो बायोप्सी होनी चाहिए, पर डॉक्टर से स्पेसिफिकली कैंसर को लेके एलिमिनेट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने मुंह के छाले का एग्जांपल दिया, जैसे ब्रेस्ट में लंप होता है, तो हर लंप शुरू में मोबाइल होता है, ठीक है ना। प्राय हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ टेंडेंसी कि अच्छा मोबाइल लंप है तो बेनाइन होगा, फाइब्रोइड होगा। ऐसा नहीं है। कैंसर का भी ब्रेस्ट लंप शुरू में मोबाइल होता है, और जब तक वो पकड़ में आता है या लोग जांच कराते हैं और सोचते हैं पहले बेनाइन है, जब तक वो बगल में गांठ ना आ जाए, फिक्स ना हो जाए, तब तक जांच नहीं कराते हैं। सो हर एरिया में, चाहे वो मोशन में ब्लड आना है, जैसे लैट्रिन में ब्लड आ गया, तो अब वो ब्लड लोग कहते हैं पाइल्स है। पाइल्स नहीं है, पाइल्स इज द डायग्नोसिस। ब्लड आया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात भी सही है कि 10 में से 8 बार वो पाइल्स हो सकता है, लेकिन जो 2 बार कैंसर है उसमें डिले हो जाएगा। सो द बॉटम लाइन इज, कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम, कोई भी साधारण सी दिखने वाली चीज, अगर उसमें 3 हफ्ते से वो चीज चल रही है या उसके 2-3 एपिसोड्स हो गए हैं, तो प्लीज डिले मत करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और मेक श्योर करें कि कैंसर तो नहीं। डॉक्टर, एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या कैंसर जेनेटिक्स है? तो 5-7% कैंसर का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो इसमें मैं ज्यादा एम्फसाइज करूंगा कि 93 to 95% कैंसर जेनेटिक नहीं है ना। लेकिन ये बात भी है कि कुछ चीजें हैं जो जेनेटिकली प्रूवन है कि वो होती हैं, तो हम लोग पेशेंट की जांच कराते हैं कि भाई ये अलग कैंसर है, ये जीन अगर है तो आप चेक कर लीजिए कि इसमें आपकी फैमिली को रिस्क क्या है और उसके लिए क्या स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल फॉलो होगा। तो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, अब ब्रेका जीन से एसोसिएशन है, लेकिन 96-97% वीमेन जो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है उनकी वो जीन नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव नहीं होती। तो इसलिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी में कैंसर सोचे तो हम पहले जेनेटिक पूल की बात करें। हम पहले बात करें कि बेसिक डायग्नोस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, किसमें एलिजिबिलिटी है टू चेक कि भैया इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, जो जर्म लाइन म्यूटेशन बोलते हैं वो हुआ है कि नहीं। अगर वो म्यूटेशन हुआ है तो उनके फैमिली मेंबर्स की स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल सेट हो जाना चाहिए। जैसे कोलन कैंसर है, ओवरी के कैंसर में है, कुछ पैनक्रियास और प्रोस्टेट कैंसर में भी है। तो हर जगह कुछ पॉपुलेशन है, बट नहीं कहीं भी 7% से ऊपर नहीं, यानी कि 93% लोग नॉन जेनेटिक या नॉन म्यूटेशन वाले हैं। तो जो 7% जेनेटिक हैं, उनमें से किस तरह के कैंसर ज्यादा, कोई स्टडी हुई है? वही मैं जो आपको बता रहा था कि ब्रेस्ट, ओवरी, कोलन, पैनक्रियास, एंडोमेट्रियम, अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स हैं जिसमें ये देखा है। अच्छा, जीन म्यूटेशंस क्या है, किस तरह होता है? जैसे हम लोग जब एक जाइगोट से जब बच्चा बनता है और बाहर हम लोग ग्रो करते हैं, बच्चे ये 1 माह से 6 माह 1 साल जैसे तो ग्रो करते जाते हैं, हर लेवल पे सेल की ग्रोथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है, डिफरेंट चीजें हो रही हैं। जैसे जैसे ये होता जाता है, जब सेल्स डिवाइड करते हैं, किसी एक जगह पे एरर हो गया, वो जेनेटिक की जो नॉर्मल डिवीजन है उससे ना होकर एबनॉर्मल म्यूटेशन हो गया, अलाइनमेंट हो गया, दैट इज अ म्यूटेशन।
कुछ म्यूटेशन जिनको जर्म लाइन म्यूटेशन बोलते हैं वो फैमिलीज में चलते हैं, उनको हेरिडिटरी कहते हैं। कुछ होते हैं जो जर्म लाइन नहीं होते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं, जो कि ट्यूमर में हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर डिस्प्रपोर्शनेटली ग्रो कर जाता है। इनफैक्ट अभी उसके बेसिस पे बहुत सारी ट्रीटमेंट टेक्निक्स भी आ गई। तो वो म्यूटेशन की चेकिंग होती है ट्यूमर की बायोप्सी से, टिश्यू से, और अगर उसमें कोई ऐसा म्यूटेशन जो ठीक किया जा सकता है उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो उससे इम्प्रूवमेंट इन आउटकम्स भी बहुत हुआ है। मतलब कैंसर के क्या क्या स्टेजेस होते हैं और उन स्टेजेस का क्या मतलब होता है? सो स्टेजिंग ऑफ कैंसर का जो मेन रीजन वो है टू हेल्प द साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सचेंज नोट्स। हम आपस में बात कर पाए कि हमारे स्टेज 1 ओरल कैंसर ऐसे आते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लान भी होता है, स्टेज 2 का ये होता है, उसमें आपके आउटकम्स कंपेयर करना, नई चीज़ें इंटरवेंशन इंक्लूड करना। तो अगर हम ले पर्सन को समझाते हैं स्टेजिंग क्या होता है तो हम कहते हैं स्टेज 1 इज अर्ली कैंसर, स्टेज 2 इज probably not so early but still localized, stage 3 is also generally localized but advanced, और stage 4 is metastatic कि फैल चुका है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है स्टेजिंग का। अब चाहे आप ओरल कैंसर में लगाएं, चाहे ब्रेस्ट कैंसर में लगाएं, चाहे कोलन में लगाएं, चाहे लंग कैंसर में लगाएं, सब जगह लगाएं, बेसिक प्रेमाइस यही है। नाउ मैं जब लोगों को समझाता हूँ तो ये कहता हूँ कि डोंट लुक एट स्टेज अलोन, ट्यूमर बायोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ द ट्यूमर का बायोलॉजिकल फीचर्स कैसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेज 4 ऑफ 2 कैंसर्स में है वेरी डिफरेंट आउटकम्स, एंड स्टेज 2 ऑफ 2 कैंसर्स सो कॉल्ड सिमिलर लुकिंग कैंसर्स कैन हैव वेरी डिफरेंट आउटकम, बिकॉज एक की बायोलॉजी एग्रेसिव है, उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट करो तब भी आउटकम पूरा है, एक में ट्यूमर बायोलॉजी अच्छी है, लेस एग्रेसिव ट्यूमर है, आप छोटा ट्रीटमेंट करो तब भी अच्छे आउटकम्स है। तो इन दोनों के बीच में चलना होता है। हमने ये भी देखा है, कई केसेस में देखा है, उससे सुनता हूँ कि जब मरीज को पता चलता है कि उनको कैंसर है तो उन्हें ये बताया जाता है कि आपका एडवांस स्टेज है, तो 3rd स्टेज में या बताया जाता है। हमारे ट्रेडिशनली भी थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे लोग रिपोर्ट करते हैं, और उसकी मेन वजह हमें लगता है वो यही है कि हम पहले साधारण समस्या समझते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि हर 2 से 3 महीने में स्टेज माइग्रेशन हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आज कोई लक्षण हुआ और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमने 2 महीने से वेट किया, जब हम जाएंगे डॉक्टर तो स्टेज 2 या 2 में आ जा चुका होगा। अगर वही डिले कर दिया 4 महीने तो स्टेज 3 में जा चुका होगा। थोड़ा सिंपलिस्टिक है एक्सप्लेनेशन, बट समझने के लिए अच्छा है कि जितनी जल्दी चेक कराएंगे उतना अच्छा आउटकम है, उतने कम इंटरवेंशन होंगे, उतनी अर्ली स्टेज में पकड़ होगा। सो एवरेज टाइम व्हेन अ पेशेंट रीचेज अ स्पेशलिस्ट वो है भी 4-5 महीने, और 4-5 महीने में स्टेज 2 और 3 पहुंच चुके हैं। सर दांत को और छालों को छोड़ दीजिए तो बाकी मामलों में क्या सिम्टम्स हैं, लोगों को कैसे पता चला कि उनकी जो बीमारी है वो मामूली है? फिजिशियन के पास वो जाते हैं और उनका इलाज कराते हैं, उनको कैसे पता चले कि ये मामूली बीमारी नहीं है, कैंसर के लक्षण हो सकते हैं? कैंसर के लक्षण यूनिक नहीं है, कोई ऐसे लक्षण नहीं जो कैंसर के लक्षण होते हैं। जैसे लोग कहते हैं वेट लॉस कैंसर का लक्षण है, वेट लॉस कैंसर का नहीं है, वेट लॉस एडवांस कैंसर का है, मेटास्टेटिक कैंसर का है। अर्ली स्टेज में सारे कैंसर और बिनाइन कंडीशन एक सी लगती है, चाहे मुंह में छाला हो, चाहे ब्रेस्ट में गांठ हो, चाहे कोलन में कोई सिंगल एपिसोड ऑफ ब्लड आया हो रेक्टम में। ये डोंट वेट कि अभी तो एक बार हुआ है, कोई इन्फेक्शन होगा या डायरिया हो गया होगा, आप जांच करा लीजिए, है ना। चाहे पेशाब में खून आ गया हो, चाहे स्किन पे कहीं अल्सर हो, या कोई गांठ पेट में एब्डोमेन में फील हो रहा हो, कहीं कोई भी स्वेलिंग या लंप या अल्सर या डिस्चार्ज है, इट शुड बी रूल्ड आउट कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। क्या कैंसर पूरी तरह से क्यूरेबल है? अर्ली स्टेज कैंसर इज ऑलमोस्ट क्यूरेबल। अगर मैं एग्जांपल लेते चलूँ, चाहे ओरल कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे कोलन कैंसर हो, चाहे गैस्ट्रिक कैंसर हो, स्टेज 1 वाले जितने हैं उन सबका क्योर रेट रेंज करता है एनीथिंग बिटवीन 85 to 100%। बहुत हद तक हम लोग कह सकते हैं कि क्योरेबल है अर्ली स्टेज कैंसर। मैं तो ये भी कहूँगा कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ कैंसर इज प्रिवेंटेबल। तंबाकू का परहेज, खान पान में इंप्रूवमेंट, जो आपने शुरू में पूछा फैक्टर्स और क्यों होता है कैंसर, अगर हम उन पर फोकस करें कि खान पान और तंबाकू का और अल्कोहल का सेवन, तो इन सब चीज़ों के कंट्रोल से 50% कैंसर कंट्रोल हो जाता है। और रिमेनिंग जो 50% है उसमें से करीब 30% ऐसा है जो या तो स्क्रीनिंग में डिटेक्ट हो सकता है या अवेयरनेस से डिटेक्ट हो सकता है। यानी कि जो हमारी लड़ाई है कैंसर की, वो अगर 80% हमारा क्योरेबल स्टेज में चला गया या प्रिवेंटिव स्टेज चला गया,
तो वो घट के 1/5 रह जाएगी, 20% लड़ाई रह जाएगी। जो एडवांस कैंसर है जिसके पास अभी भी हमारे पास कोई तरीका नहीं है अर्ली पिकअप का, हालांकि बहुत रिसर्च चल रही है उस दिशा में, बट नहीं है। डॉक्टर साहब ये बात भी कही जाती है कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है जो कि लंबा भी चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, क्या है साइड इफेक्ट्स? ये कहूँगा कि हम लोग साइड इफेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट फोकस करते हैं। ये जानलेवा, एक तरह से जानलेवा बीमारी है और इसके जो ट्रीटमेंट प्लान है, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो कीमो है, चाहे वो रेडिएशन है, चाहे वो सारी मोडेलिटीज का इस्तेमाल है, अगर आप देखें तो अर्ली स्टेज में कम से कम यूज होता है और कम से कम साइड इफेक्ट्स। जैसे जैसे एडवांस स्टेज आती है साइड इफेक्ट्स थोड़े बढ़ते हैं क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ता जाता है और आउटकम पूरा हो जाता है। सो हर चीज़ के अलग साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम सर्जरी की बात करें तो जैसे ब्रेस्ट सर्जरी हुई या हेड नेक सर्जरी हुई तो शोल्डर मोबिलिटी में चैलेंज आता है थोड़ा, बिकॉज जो डिसेक्शन होता है उसमें जितनी नर्व्स हैं बेयर हो जाती है। जब बेयर हो जाती है तो उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट, टिंगलिंग, नमनेस, पेन, ये सब चीज़ें होती हैं। कीमोथेरेपी की बात करें तो बाल का गिरना या काउंट्स लो होना या इम्यूनिटी लो होना, ये सब चीज़ें हैं। या रेडिएशन की बात करें तो लोकल ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स होते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर सेल्फ लिमिटिंग एंड ओनली फॉर दैट पीरियड व्हेन द ट्रीटमेंट हैपेंस। बियॉन्ड दैट वो ठीक ठाक चलता है। ट्रीटमेंट में क्या कोई रिस्क होता है? ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रीटिंग टीम के साथ लगातार एंगेज रहें और यू नीड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द ट्रीटिंग साइड। बिकॉज जब काउंट्स लो होंगे तो इन्फेक्शन ना हो, कुछ और होगा तो उस समय सर्जरी है तो उस समय केयर करना है, कैसे फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन कराना है, खून कैसा है, थिंग्स लाइक दैट। सो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हैं एंड दे नीड सपोर्ट एंड केयर, बट लार्जली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर मैनेजेबल एंड दे शुड नॉट बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, सेल्फ लिमिटिंग। तो इस रिस्क को किस तरह के फैक्टर्स और बढ़ाते हैं? सो अगर आप कंटिन्यू टू स्मोक या अगर आप डायबिटिक हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, या खान पान में कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, जो डॉक्टरों की एडवाइस है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सर एक बात बहुत सुनने को हमें मिलता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है हिंदुस्तान में, जितने के लोग विदेश चले जाते हैं इलाज कराने। क्या ये सही है कि हमारे देश में अभी इतनी सुविधाएं नहीं है? आज की तारीख में जब हम लोग सब कुछ गूगल करके और सब तरह से चेक कर सकते हैं कि जहाँ क्या सुविधा अवेलेबल है, मैं यही कह सकता हूँ कि लगभग हर क्षेत्र में हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ है कंपेरेबल टू दी बेस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड। जो मिसिंग है प्रॉब्ली वो रिसर्च पीस मिसिंग है कि जहाँ वहाँ कटिंग रिसर्च हो रही है वहाँ पे हम लोग नहीं है। हैविंग सेड दैट, जो एक्सेस है ट्रीटमेंट का, अगर हम देखें Tier 2 सिटीज में, Tier 3 सिटीज में और रिमोट सर्च है, वो पुअर है। बट मुझे लगता है कि पिछले 8-10 साल में गवर्नमेंट ने इस दिशा में बहुत काम किया। जैसे भी हमने सुना आसाम में 8 कैंसर सेंटर्स एक साथ शुरू हुए, वो पूरी एक चेन है, प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, टर्शियरी सेंटर। तो इस तरह के मॉडल्स पे भी काम चल रहा है और लिंकिंग बहुत हो रही है। लोग आजकल वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, अपने घर पे बैठ के सॉफ्टवेयर की मदद से और बेस्ट सेंटर्स पे ओपिनियन ले सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं, सो दैट दे आर एबल टू यूटिलाइज देयर टाइम अप्रोप्रिएटली। फॉर्चुनेटली इवन मैं देखता हूँ जो Tier 1, Tier 2 सिटीज हैं, वहाँ भी नए नए सेंटर्स आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, ट्रेन मैन पावर निकल रही है। So overall, there's a sense of optimism which I am seeing, and I think as we connect all these dots, access will get better and better addressed. क्या इस बीमारी का, कैंसर का कोई सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी है, कोई उससे रिलेशन? बिल्कुल है। So अगर आप देखो तो हर कैंसर का एक पैटर्न है। जैसे मैंने कहा ओवरी और यूट्राइन कैंसर, वो जो है हायर सोशियोइकोनॉमिक क्लास में ज़्यादा होता है कंपेयर टू लोअर। सर्वाइकल कैंसर लोअर में ज़्यादा होता था, oral cancers लोअर में ज़्यादा होते हैं। So there are certain factors and these are likely linked with your addictions and lifestyle. This has nothing else to do. The cancer doesn't know your economic status, but that knows how you eat and how you behave and how you work. So उससे वो इवॉल्व होती है चीज़ें। जैसे आपने बताया कि कुछ हाई सोसाइटी में ज़्यादा होते हैं, कुछ कितने ऐसे इस तरह के मामले हैं जो हाई सोसाइटी में ज़्यादा होते हैं और लोअर क्लास में? ओवरी, एंडोमेट्रियम, कोलन, ये सब जो है ना फैट कंजम्पशन रिलेटेड है। जहाँ पे डाइट में फैट ज्यादा होता है वहाँ पे बढ़ जाता है। क्या कैंसर डिटेक्शन के मामले भी बढ़े हैं? अभी जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, सुविधाएं फॉर डिटेक्शन, फॉर बायोप्सी, फॉर स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी, एवरीथिंग बिल्कुल बढ़ा, और वो भी बढ़ा है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बढ़ी हैं, बायोप्सी का एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स बढ़े हैं। तो सब तरीके से अगर देखें तो ओवरऑल हर दिशा में कुछ ना कुछ कदम लिए गए हैं जिससे इम्प्रूवमेंट हुआ है।
कैंसर पेशेंट के लिए डॉक्टर साहब क्या कोई खास डाइट प्लान होता है, आप लोग बताएं। मैं सिर्फ दो चीजें बोलता हूँ, एक तो ये कि डाइट अपने वेट को कंट्रोल में रखिए और अपना फैट कंजम्पशन कम रखिए। ये दो चीजें, ये तो खाने के। जो दूसरा एक और चीज है वो एक्सरसाइज वाला पार्ट, हम उसको भी रेगुलरली परस्यू करें। तो अगर पर डे आपकी 40 मिनट्स की एक्सरसाइज है, ब्रिस्क वॉकिंग है या ट्रेडमिल है या वेट लिफ्टिंग है, जो भी आप अच्छी एक्सरसाइज करो, तो दैट इटसेल्फ विल टेक केयर ऑफ योर फिटनेस लेवल एंड इट हैज अ प्रिवेंटिव रोल आल्सो। कोविड के समय में पिछले 2 साल से और कैंसर पेशेंट के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा हो। आप अपने अनुभव से बताइए, क्या कैंसर पेशेंट के लिए क्या चुनौतियां रही इस कोविड के दौरान? हर लेवल में चुनौतियां आई, फ्रॉम रीचिंग द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस, reaching the GP for diagnosis, then reaching the hospital to reach a specialist, then to get the treatment done without any interruption was also very difficult. And this fear कि अभी कोविड हुआ तभी कोविड हुआ, घर वालों को हो गया, इनको हो गया, उस चक्कर में लोग आते नहीं थे, कम होता था। कितने सारे लोगों के ऑन ट्रीटमेंट इंटरप्शंस हुए, कीमोथेरेपी चल रही थी रुक गया, रेडिएशन चल रहा था रुक गया। इवन जब ट्रीटमेंट चल रहा है, कोविड इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमनली हुए और उसका भी अपना इम्पैक्ट हुआ। मुझे बस 2 पॉजिटिव फॉलोअप दिखते हैं। एक तो ये कि डिजिटल का यूसेज बहुत बढ़ गया है, इससे एक्सेस में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और नंबर 2, जो कोविड के चक्कर में सीटी स्कैन वगैरह हुए, उसमें बहुत सारे लंग कैंसर रिलेटिवली अर्ली डिटेक्ट हुए, जबकि लंग कैंसर टिपिकली स्टेज 4 में पकड़ में आता है 90% लोगों में। बट इस दौरान वो पिकअप रेट अर्ली स्टेज का बढ़ गया, बिकॉज कोविड के लिए लोगों की बहुत सारी सीटी स्कैन हुए, उससे पता चला। तो ये भी हुआ कि कोविड से मरने वालों में कैंसर पेशेंट की संख्या भी ज्यादा रही। ये डेटा मेरे पास हार्डकोर नहीं है, बट ये मैं फ्रॉम एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ कि ऑब्वियसली अगर कोविड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को होगा तो उसका आउटकम पुअर होगा। बट जो लोग ठीक हो गए कैंसर से, उनमें रिस्क ज्यादा नहीं होता। ये जिंदगी भर कोई लो इम्यूनिटी नहीं चलती है, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही होता है। वंस यू आर आउट ऑफ इट, यू आर आउट ऑफ इट। सर, कैंसर को लेकर जो पॉलिसी है हमारी सरकार की पॉलिसी देश में, क्या पर्याप्त है या बदलाव की जरूरत है? अब आप किसी पर्टिकुलर पॉलिसी की बात करें तो मुझे नहीं पता है। जो ओवरऑल स्क्रीनिंग के लिए अभी 2-3 चीज़ों में काम हो रहा है, ICMR इज ऑल्सो वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैसे हम लोग स्क्रीनिंग को मास पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग ट्रेड मैन पावर नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। जो इसके अलावा जो हमारी पॉलिसीज़ हैं टोबैको के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी वी आर अमंग्स दी बेटर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो होता है WHO का टोबैको कंट्रोल से, उसके ऊपर हम लोगों का अच्छा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, क्वाइट अहेड ऑन दैट। और हमारी अवेयरनेस लेवल सब पे बहुत काम हुआ है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे ज़्यादा काम नहीं है। जो हमारे ट्रीटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बट वही है, दे आर लिमिटेड टू मेट्रोज एंड Tier 1 सिटीज़। अब हमारा टाइम आ गया हम Tier 2 सिटी और Tier 3 सिटीज़ में जाएँ, जहाँ पे पॉपुलेशन बेस कम है, इकोनॉमिक उतना वो नहीं है। प्रॉब्ली वहाँ से इम्प्रूवमेंट शुरू होगा तो बहुत अच्छा होगा। नई चीज़ें करने में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को स्क्रीनिंग सेंटर बना सकते हैं, मेडिकल कॉलेज से लिंक कर सकते हैं, जिससे कि जो भी कैंसर पेशेंट वहाँ भी आ रहा है और उनसे कंटिन्यूस एक्सचेंज से अर्ली पिकअप रेट बढ़ जाएगा और आउटकम्स बेटर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या ये मानते हैं आपकी कैंसर के ट्रीटमेंट में अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत और दवाओं की जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरत, मतलब मामूली नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं ये कहूँगा कि कैंसर ट्रीटमेंट में पिछले 15 साल में बहुत एडवांसमेंट हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से अब सडनली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई है। जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्टिंग शुरू हो गई है और म्यूटेशंस पता चलने लग गए हैं, तो अब हम सिंपल दवाओं से बड़ा एडवांस स्टेज कैंसर भी ट्रीट कर पा रहे हैं। एक तो ये, तो मेरा तो ये भी एक्सपेक्टेशन और सजेशन है कि हमारी भारत सरकार अगर रिसर्च में ज़्यादा पैसा लगाए तो प्रॉब्ली हम लोग पूरी दुनिया का भला कर पाएंगे, क्योंकि लो कॉस्ट ट्रीटमेंट आउटकम्स अगर निकलेंगे तो उसका बहुत इम्पैक्ट होगा इसका। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू हमसे बात करने। आज का हेल्थनामा आपके लिए बहुत काम का है, ये हमारी उम्मीद है। किसी भी मामूली बीमारी को हल्के में ना लें और समय पर इलाज कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें, खासकर तब जब बीमारी ठीक होने में ज़्यादा समय ले रही हो। नमस्कार।
और अब वक्त है एक और हेल्थनामा का। एडमिन प्लीज दूसरा हेल्थनामा चलाएं जो बूस्टर डोज पर आधारित है। नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में तीसरी यानी बूस्टर डोज का दौर चल रहा है, लेकिन लोगों में एक दुविधा है, खासकर उन लोगों में जो या तो हाल ही में दूसरी डोज ले चुके हैं या उनमें जो ओमिक्रॉन के संक्रमण से हाल ही में रिकवर हुए हैं। दोनों ही केस में उनके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ गई है। अब वे पेशोपेश में हैं कि बूस्टर डोज अब लें या बाद में लें। डॉक्टर्स भी इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि दूसरी डोज और बूस्टर के बीच 9 महीने का जो गैप रखा गया है उसे 6 महीने कर देना चाहिए। आइए सुनते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है, आसपास देखा है और पढ़े लिखे लोगों में देखा है कि कोविड रिकवरी के बाद वो अपने आप बिना डॉक्टर के सलाह के अपने आप ब्लड थिनर लेने लगते हैं, दवाइयाँ लेने लगते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन, कार्डियो से रिलेटेड। यस, ये कितना सही है? इसमें सही का कोई क्वेश्चन नहीं। कोविड के बाद और मैनिफेस्टेशंस के बाद कोई भी ब्लड थिनर लेना until unless there are definitive indications या अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ध्यान रखिए, इस बात को समझ कर चलिए। एवरी ब्लड थिनर जो आप लेते हैं उसके साथ एक स्मॉल ब्लीडिंग रिस्क आता है, और वो स्मॉल ब्लीडिंग रिस्क 2 प्रकार का होता है। वो मेजर और माइनर ब्लीडिंग होता है, और वो मेजर ब्लीडिंग अगर ब्रेन ब्लीडिंग कर देता है तो इट कैन बी अ रियल डिजास्टर। तो इसलिए मेडिकल साइंस का जो गोल्डन रूल होता है वो हमेशा होता है डू नो हार्म। इसलिए कोई भी मरीज, कोई भी लोग जो सुन रहे हैं वो इस चीज को ध्यान रखें, सेल्फ मेडिकेशन इज डिजास्टर्स। आप कोई भी मेडिसिन लें अपने डॉक्टर्स के कंसल्ट में लें। मेरे भी कई मरीज ऐसे थे जिनको हमने ब्लड थिनर्स एडवाइस किए पोस्ट कोविड, लेकिन मॉनिटर्ड और स्ट्रक्चर्ड वे से दिए, और जब हमें लगा दिस इज नॉट इंडिकेटेड हमने उसे इमीडिएटली विड्रॉ किया। इसलिए दवाइयां एंड सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी वेरी हार्मफुल। और इसलिए मैं आपको एक बात और भी बोलना चाहूंगा जिसको आप सब समझ कर चलें, जिसको मैं कहता हूं इडियट सिंड्रोम। इडियट सिंड्रोम जो होता है वो है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट। ये बहुत कॉमन है, दिस इज अ नोन एंटिटी। तो इसलिए सब डॉक्टर्स को, सब पेशेंट्स को इस चीज को समझ कर चलना है, क्योंकि आज इंटरनेट पर इतना इंफॉर्मेशन है कि आप चेस्ट पेन टाइप करेंगे तो वो प्रूव कर देगा कि आपको कैंसर है। ये गलत है, वो आपको हर दवाई के लिए एलिजिबल शो करता है। इसलिए इंटरनेट के द्वारा सर्च ना करें, आप अपनी सर्च को किसी और चीज में लगाएं, लेकिन ये डॉक्टर्स का कार्य उन्हीं को करने दे। एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके वो डिसीजन ले, लेकिन इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन हमेशा आपके ट्रीटमेंट को। अगर किसी को हार्ट एलिमेंट पहले से है तो क्या उसको बूस्टर डोज लेना चाहिए? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? Irrespective of any ailment, irrespective of any condition, until and unless यदि आपको कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, कोई एक्टिव फीवर है, कोई एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, booster dose is not contraindicated. It should be taken by most of the individuals. तो ये हमारे लिए मिथ्स हो जाते हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर आपको है तो आप उसको ले सकते हैं। हार्ट अटैक के मरीज हैं, कोई और बीमारी है, आप उसको ले सकते हैं। बूस्टर डोज गोइंग टू गिव यू सिग्निफिकेंट बेनिफिट, और ज्यादातर मरीजों में देखा गया है इवन इन मोरिबेंड पेशेंट्स भी, उन लोगों के अंदर ये कोई भी हार्म प्रोड्यूस नहीं करता है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि यदि आप एलिजिबल हैं आप बूस्टर डोज जरूर लीजिए। ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो कितने दिनों के लिए होता है, और इस नेचुरल इम्यूनिटी के बीच में ही क्या इसकी जरूरत है बूस्टर की, या उस पीरियड के बाद लिया जाए? ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठा दिया। देखिए, ये जो वैक्सीन की इम्यूनिटी जो रहती है वो समय के साथ हमको ज्यादा जानकारी आती गई है। अभी हम समझते हैं 6 से 9 महीने रहेगी। अब इसमें 2 एस्पेक्ट देखिए। जब किसी को इन्फेक्शन होता है या वैक्सीन लगती है तो इम्यूनिटी आती है। उसके बाद अगर वो इम्यून हो जाता है वो जिंदगी भर के लिए इम्यून नहीं होता है। 2 चीजें उसमें आती हैं। एक तो इंसान की जो इम्यूनिटी है वो समय के साथ फेड करती है।
6 से 9 महीने के अंदर फेड कर दिया। 9 महीने मान लीजिए पहले था, अब सोच रहे हैं कि हम थोड़ा जल्दी दें, उसका कारण है। तो एक तो इम्यूनिटी फेड करती है जिसकी वजह से उसको रिस्क लगता है कि वो ओमिक्रॉन हो या कोई भी कोविड हो लग जाएगा या कोई भी वायरस हो। दूसरी चीज ये होती है कि जो वायरस है वो ज्यादा चुस्त हो जाता है, उसकी हजारों म्यूटेशंस आ चुकी हैं और हल्की हल्की जो म्यूटेशंस आती हैं वो हो सकता है कि पुरानी जो आपकी वैक्सीन चल रही है उससे पूरी अच्छी तरह से कवर नहीं हो। और इसके ऊपर साइंस की एक बहुत अच्छी रिसर्च आई थी और डॉक्टर ब्लूम की फ्रेड हचिसन सेंटर से। उन्होंने क्या करा कि 1980 के दशक के उनके पास कुछ ब्लड सैंपल थे। तो हमको ये पहले जान लेना चाहिए कि 1980 के दशक में भी ये कोरोना वायरस आता था। कोविड जो है उसका भयंकर रूप है, लेकिन जो कोरोना वायरस की कैटेगरी है वो उस समय भी थी। तो उन्होंने उस सैंपल को लेके देखा कि उस समय जो कोरोना वायरस था वो था 229E, उसके अगेंस्ट वो काम करता था, कारगर था। जब वो और 8-10 साल आगे निकल गए, 1990 के दशक में आ गए, तो उन्होंने देखा उसका असर कम होता जा रहा है। उसकी इम्यूनिटी वही थी इंसान की, लेकिन वायरस बदलता जा रहा था। एक चीज जो दो और देखने को उसमें आई कि जब आप वैक्सीन लगाते हैं, अगर वायरस अपना रूप बदल भी लेता है तो उसके अगेंस्ट वो इफेक्टिव रहता है, उतना नहीं रहता जितना कि शुरू में था। इसीलिए जो है नई जो वैक्सीन बनती है उसमें नए म्यूटेंट्स जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। तो और अभी इस साल के एंड तक नई इसके वो वैक्सीन आ जाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम वायरस को ये मान के चलें कि वो फिक्स है और इम्यूनिटी हमारी फिक्स है, तो ये सोच ठीक रहेगी। डॉक्टर साहब, बूस्टर डोज को लेकर डॉक्टर्स की राय भी बटी हुई है। हमारे शो में ही कुछ दिन पहले कई डॉक्टर ने कहा था कि मास वैक्सीनेशन के बजाय फोकस्ड वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है, बूस्टर डोज की अभी जरूरत थी? ये जो कोविड का प्रकोप आया, पैंडेमिक आया, उसमें फोकस्ड वैक्सीनेशन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जब हमने 2 साल पहले शुरू करा था तो हमको ऐसा महसूस होता था कि बुजुर्ग लोग हैं, कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, उनको पहले देना चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को देना चाहिए। वो फोकस्ड सेगमेंट इसलिए समझ में आता है क्योंकि उसमें कोविड का रिस्क ज्यादा होता है। अब इस स्पेशल सेगमेंट को निकाल दिया जाए तो पब्लिक में जो कि 60 साल से नीचे है या 6 साल से नीचे है, उनमें जर्नल दिया जाए या कोमॉर्बिडिटीज के साथ दिया जाए, उसके बारे में कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। वो इसलिए पहले हम सोचते थे कि बच्चों में शायद ये इतना आता नहीं है, लेकिन आपको जान के अचरज होगा, हमारे देश का जो डेटा आया है और जो वेस्टर्न कंट्रीज से डेटा आया है उसमें आया है कि ये इन्फेक्शन बच्चों में उतना ही कॉमन है, उससे अधिक कॉमन है। सिर्फ ये कि उसकी मैनिफेस्टेशन या तो अलग होती है या हल्की होती है। अभी लास्ट वीक अमेरिका का डेटा लीजिए आप, उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में हमने टेस्ट करके देखा, जो हमारी पॉपुलेशन है जिसको इन्फेक्शन हुआ, देखिए आज की तारीख में आप टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि जो आपकी एंटीबॉडीज है वो इन्फेक्शन वाली है कि वैक्सीन वाली है। अडल्ट लोगों में इन्फेक्शन आधों को हो गया है अभी फरवरी तक, और बच्चों में 3/4 में हो गया है। ऐसी हालत में ये कहना कि कोई तबका रह जाएगा, अछूता रह जाएगा, उसको वैक्सीन अगर उसको वैक्सीन नहीं लेगा और उसको कुछ नहीं होगा, तो वो गलत मानना होगा। मेरा मानना ये है कि कोविड जो आया है वो ऐसी तेजी से फैला है, तेजी से आया है कि वो सबको ही ग्रस्त करेगा अगर वैक्सीन नहीं लिया। दिल्ली में तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में अभी सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में आ रहे हैं हर रोज। आपके हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है और क्या ये चिंताजनक है? हॉस्पिटलाइजेशन के रेट्स जो हैं, जो आपने पूछा, हमारे कोविड के जो बेड्स हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स as we have already mentioned कि hospitalization rates 12 times decrease होते हैं after having the 2 doses of vaccine and the booster vaccine। और इसमें भी देखा गया है जो भी पर्सन्स हॉस्पिटलाइज होते हैं उनमें 94% रिडक्शन है ऑन वेंटिलेटरी सपोर्ट एंड डेथ्स। तो इट इज़ वेरी गुड कि हमारी
जैसे हम आपको बोलते हैं कि जैसे मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि हमारे फ्रंटियर पे अगर इंडियन आर्मी मजबूत होगी तो हमारी पाकिस्तानी आर्मी कम घुसपैठ कर पाएगी, और घुसपैठ करे भी ये भी तो छोटा मोटा नुकसान करके निकल जाएगी। So similarly, this is what is vaccination for the lay people, कि अगर हम वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है और या हमारी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, और उसके कारण हम अपने रोगों से निपटने के लिए हमारी तैयारी रहती है। ओमिक्रॉन स्पेशली फैलता जल्दी है, बहुत ज्यादा कंटेजियस है, एक दूसरे से ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी ज्यादा है, लेकिन कई केसेस जो है वो घर पे ही छोटे मोटे सिम्टम्स के द्वारा ठीक हो रहे हैं। किसी सीनियर साइंटिस्ट ने कहा कि अभी 40 वेरिएंट और आ सकते हैं, ये तो आपने अभी सुना, मैंने उनसे पूछा। मेरा सवाल ये है कि आप कब तक डोज देते रहेंगे इनको, कब तक बूस्टर देते रहेंगे? किसी ठोस दवा पर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 2 साल हो गए हैं इसके आए। देखिए, जो वायरस है उसकी कुछ खासियतें होती हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल हैं, और कुछ उसकी जो खासियतें हैं वो होस्ट के लिए बेनिफिशियल है। वायरस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लाइफ। तो वायरस में म्यूटेशन होना एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हमेशा से होते रहे हैं, होते रहेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो कौन से वायरस हैं जो हमें प्रभावित कर सकते हैं या हमारे शरीर में गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं, जिनको हम वायरस ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो अगर वायरस ऑफ कंसर्न डेंजरस बन रहे हैं, वो इस किस्म के बन रहे हैं जैसा कि डेल्टा था जिसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी, तो हमें निश्चित रूप से परेशान होने की आवश्यकता है। जब भी हम वैक्सीन इजाद करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर उसका पोर्शन वायरस का आदमी के शरीर में डाल करके उससे प्रतिरोधन क्षमता को पैदा कराते हैं। उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे mRNA वायरस जो वैक्सीन है उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। कई बार हम डेड वायरस भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोवैक्सीन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जो मेनली जितने वैक्सीन बनाए गए वो एम स्पाइक की प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए। अभी जो हमारे पास नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो बेसिकली उसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें भी चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से वो हमारे इन वैक्सीन को मात देने में सक्षम है। लोग बाग हमारे जो साइंटिस्ट हैं लगे हुए हैं कि और वो रिफाइंड फॉर्म में कुछ वैक्सीन बनाएं, लेकिन अभी तक भी जो वैक्सीन बने हैं वो निश्चित रूप से कई मायनों में प्रभावकारी हैं। कई डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि जो गैप है बूस्टर डोज लगाने के लिए 9 मंथ्स का, उसको कम करना चाहिए। इवन अडार पूनावाला ने भी ये कहा। इसके पीछे क्या साइंटिफिक तर्क है या कोई कमर्शियल तर्क? बिल्कुल सर, साइंटिस्ट जैसे मैंने कहा कि हम लोग स्टडीज इसके अभी देयर आर स्टिल ऑनगोइंग स्टडीज अबाउट बूस्टर डोजेस, बिकॉज कई सारे नए वैक्सीन आ रहे हैं, अलग अलग तरह के वैक्सीन, कुछ वेक्टर बेस्ड थे, कुछ प्रोटीन बेस्ड है सर, कुछ mRNA बेस्ड है। और अलग अलग वैक्सीन को देखते हुए सबने ये कंक्लूड किया कि हर एक वैक्सीन के बाद मोस्टली जो IgG एंटीबॉडी का हाफ लाइफ था सर, वो तकरीबन 4 से 6 महीने में आ रहा था। That is, it was at its peak in about 4 to 6 months after previous vaccine, after the vaccination dose. So hence एक उन्होंने एक window period दिया था जिससे ये कहा जाता है कि 6 months एक टाइम होना चाहिए उसको लगाने के लिए। But considering the scarcity and the production rate at which अभी vaccination बन रहे हैं सर globally, not just our country but globally, इवन आफ्टर द फर्स्ट डोज हम लोग को लग रहा था कि सेकेंड डोज की पॉपुलेशन को कवर करना मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वायरस भी उतनी तेजी से फैल रहा था, पॉपुलेशन भी उतनी तेजी से इन्फेक्ट हो रहे थे। बट हैविंग टू कंसिडर कि इतने सारे वैक्सीन्स अभी है एंड मोस्टली एटलीस्ट वी आर लकी इनफ कि हमारे कंट्री में वो इजीली अवेलेबल है। मैक्सिमम पॉपुलेशन हम ऑलमोस्ट कंप्लीट वैक्सीनेट कर चुके हैं, एटलीस्ट द हाई रिस्क पॉपुलेशन हम ऑलमोस्ट नियरिंग टू कंप्लीशन ऑफ आवर वैक्सीनेशन। तो लग रहा है कि बूस्टर डोजेस का ड्यूरेशन भी इसी को देखते हुए हम 6 to 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में भी किया जा सकता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि कई देशों में 4 डोज लग चुके हैं, इजराइल में 4था डोज अभी लग रहा है और वहाँ इन्फेक्शन भी फैल रहा है और नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। तो जैसा कि प्रोफेसर
नरेश गुप्ता ने कहा कि क्या ये एडिशनल डोज सीवियरिटी रोकने के लिए है? जी, ये बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि हम सब के मन में यही क्वेश्चन आ रहा है, खासकर अभी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल सबके लिए ओपन है और हर एक कंट्रीज के अपने अपने रूल है बूस्टर डोजेस को लेके। लेकिन सर, जब ये ब्रेक थ्रू इन्वेंशन हुआ था, जब ये वैक्सीन आया था, तब जब हम फर्स्ट डोज की बात कर रहे थे, तो ये देखा गया था कि फर्स्ट डोज का जो इफेक्ट है वो तकरीबन 90 डेज तक लास्ट करता है। माने हमारे एंटीबॉडीज पीक होते हुए 90 डेज तक इसका ड्यूरेशन पूरा लास्ट करते हैं, और उसके बाद वो जो है उसका वेनिंग देखा गया था, माने उसका इफेक्ट जो है वो कम होता हुआ देखा गया था। हेंस वी थॉट कि एक सेकेंड डोज भी होना चाहिए। सिमिलरली सर, जब सेकेंड डोज लगाया गया उसके बाद भी कई सारे स्टडीज हुए, वेरियस पॉपुलेशंस में, अलग अलग कंट्रीज में स्टडीज हुए, और मोस्टली सारे जो स्टडीज थे उसका एक कंक्लूजन ये बना था कि जब भी हम सेकेंड डोज लगा रहे हैं उसके भी अराउंड 6 to 12 मंथ्स के बाद जो ये इफेक्ट ऑफ एंटीबॉडीज है, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन IgG स्पाइक एंटीबॉडी कहते हैं, उसका जो पीक है वो भी हमने देखा था कि वो डिक्लाइन हो रहा है लोगों में थ्रू वेरियस स्टडीज एंड टेस्ट। तो फिर ये कंक्लूड हुआ कि एंड इन द सेम टाइम ऑफ कोर्स वायरस म्यूटेट हो ही रहा था, और हम देख रहे थे कि अलग अलग तरह के वेरिएंट्स हम फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग सिम्टम्स देखे जा रहे थे लोगों में। सो विद दैट आई थिंक जो वेरियस म्यूटेशंस और अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंटेशंस हो रहे थे, उन्होंने अपने ही पॉपुलेशन में ये स्टडीज करके कंक्लूड करने की कोशिश की कि ये स्पाइक IgG एंटीबॉडी जो है ये कितने दिनों तक लास्ट कर सकता है। हेंस दे ईच ऑफ देम केम टू अ कंक्लूजन सेइंग कि हमको इस ड्यूरेशन में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द वायरस। हेंस अलग अलग कंट्रीज ने अपने रूल्स बनाए, बट WHO ने इसको हमारे लिए बहुत ही एक सारी स्टडीज को क्यूमुलेटिव एक कंक्लूड किया उस टाइम की 4 to 6 मंथ्स जो है वो एक आइडियल गैप माना जाएगा फ्रॉम द फाइनल प्रिलिमिनरी जो वैक्सीनेशन है हमारा, दैट इज फ्रॉम द सेकेंड डोज। डॉक्टरों की बातों से एक बात तो जाहिर है कि हमें बूस्टर डोज ज़रूर लेनी चाहिए। फिलहाल तो सरकार ने जो 9 महीने का गैप निर्धारित किया है उसे ही ध्यान में रखना होगा। वायरस इन्फेक्शन के गंभीर परिणामों से बचने के लिए हर एलिजिबल व्यक्ति को बूस्टर डोज लेना चाहिए। नमस्कार। Welcome back. Let me remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube. We now move on to a very special segment, which is the launch of Heal with Food, written by Miss Manjari Chandra, a well-known nutritionist and wellness coach who runs Manjari Wellness. Welcome, Manjari, once more. Glad to have you on our show. Please unmute yourself. Please unmute. गुड मॉर्निंग शंकर। Good morning, yes. नमस्कार किशोर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। It's always a pleasure having you on our show, and this is a very special occasion. I think this is your second book. Yes, it is. Yes, Good. it is. Yes. Thank you. I must tell you that I have not got your second book. The first book I got, and I thoroughly enjoyed reading it. I hope to read it in the coming days. Yes. Now, Ms. Manjari, I suggest. Pardon? Missing from my end, it was my intention. No, I just reminded you, that's all. Well, I suggest that you introduce the book, what inspired you to write it, and read excerpts from the book for about 15 minutes, which will be followed by question and answers. That's very kind of you. It's really a pleasure to be on part of this show, and I must congratulate you, Mr. Shankar and Mr. Malve, because the show has become very, very popular. I've heard so many people talk about it and the relevant topics that are picked up. Of course, today I've been invited. It's been very kind of you to invite me to talk about my new book. Thankfully, the book is doing well. It's available across e-commerce platforms and in all the leading bookstores in India. Essentially, the concept of the book Heal with Foods, I'm holding it in my hand, is essentially that
I wanted to write a book for the layman, for everybody to read on how they can go back to their kitchens and understand how they can use their food to heal their bodies from all these different diseases that we see today. Of course, COVID has been on people's minds, so infection has been the hot topic for many, many days now. But besides that, there are many other health conditions that people are plagued by, a constant presence of things like hypertension, heart disease, diabetes, cancer, high cholesterols, hormonal imbalances, neurological disorders. These have become the order of the day, especially in larger cities. In fact, because I work in a clinical setting, I must say that now, when we see patients who are 60, 65 years old and even older, and if they have diabetes and hypertension, they normally have a very milder form of the disease, which means they may have it, but it's normally controlled with very little medicine. But when we see the same sort of diseases in much younger population, people in early 30s or early 40s, the disease is far more robust. It means that it's manifested far more in these people at an age where they should not be having these diseases. And the reason for this specifically is our poor lifestyles. I mean, we call it lifestyle-driven disease. So, if you look at the denominators that rule this numerator of being unhealthy or having a cardiometabolic disease, food tends to be 60 to 80% of the story. So if you could correct your food and if you could use your food really not to feed disease, but to heal our bodies, then the incidence of these diseases itself goes down. And therefore, the dependence on medication, the complications associated with them also goes down substantially. And that was the idea of writing this book. The book is essentially divided into many sections. And it talks about how initially what we see influences what we eat. Many times we eat not because we want to eat certain types of foods, but because it is more easily available. It is more industrially produced. It's more cheap to buy. It's more easy to order. So a lot of food that we eat is not really the food that I would like to eat, but it's more a part of convenience, availability. And that has been done in a very structured manner by the food industry in a way that food which is available to us is cheap, it's affordable, but it's obviously not nutritious. On the other hand, it's in fact disease causing. In fact, Mark Hyman has said a very famous quote saying that whatever we eat, we are either feeding disease or we're feeding health. So it's our choice that we can make whether we want to feed disease or whether we want to feed health. I want to read a few lines from the book as told by Mr. Shankar. So just reading a little small paragraph here. This essentially talks about how what we eat is really not what we want to eat. So what we think while selecting the food we buy is based on what has been directed to our subconscious by the constant influx of misleading information, advertisements, and peer influences. Additionally, lack of time to cook fresh food for ourselves and not wanting to spend a few extra bucks on much healthier food do more harm than good to our body. It's really all about developing a habit. Just as we've developed a habit of eating poor quality food, we can also cultivate the habit of eating healthy and wholesome food. We can work on avoiding future medical expenses. Currently, our food choices are influenced by what's being supplied, visible, and accessible to us instead of what would be there in our kitchen shelves. Otherwise, we would have had more vegetables for salads in our refrigerators, more almonds and pistachios and packets of instant noodles and chips in our kitchens, and more melons, kiwis, berries, and papayas than boxes of industrially processed fruit juices and drinks. So every time I crave a fruit, it's so easy to cut a fruit juice. It's very satiating, it's sweet, it's cold, it's very convenient. You don't even have to buy or chop a fruit.
The problem with our food is that we are now depending more on convenience food, and a lot of it has to change. In fact, I thought I'll just keep a few things handy to just show to you. So there's one here. I've kept a small box of these really, really powerful, Indian spices, whole spices. So mulethi, whole turmeric, the large cardamom, there is some clove, there is some dried ginger, there is also some dried cardamom, cinnamon. All these spices that we normally find in our kitchen are not just healthy, but they're also in a way healing our body, because many of them are antiviral, they are antibacterial. In fact, so much so that many of them are anti-inflammatory and anti-cancer. They can reduce inflammation, they can kill tumor cells. So that is one of the things that we can easily include. In fact, there's a whole chapter dedicated to spices in the book, which talks about how we can restart using our spices to regain our health. And there are a couple of drinks that I made. So instead of opening that fizzy drink which is kept in your fridge, or that Tetra Pak juice that is kept in your fridge, you could, this is an aam panna, which is essentially raw mango and some mint leaves. It takes 5 minutes to make. It's very, very nourishing, extremely high on antioxidants, extremely tasty, and also very rehydrating. So something like this is Bale Sharbat. Bale is actually stone fruit, and it's an indigenous fruit in India. It's a big ball. It's called the stone fruit, and it has a very nice orange pulp inside. So you just take out the pulp and you mash it with water and strain it, and you have the most nutritious. Bale is in fact a superfood, and in summers in North India, it's found in plenty. So a little effort, a little going back to our traditional food is what we should do, and that is what I intend to communicate from the book. Thank you. Over to you, Shore, for first round of questions. थैंक यू सर, थैंक यू। मंजरी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस नई किताब के लिए। आपने लिखा है कि फूड मार्केट आजकल एडोलसेंट हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है, बहुत प्रभावित कर रहा है। तो ये किस फूड मार्केट की आप बात कर रही हैं और कैसे प्रभावित हो रहा है, जरा विस्तार से बताएं। क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, स्पेशली एडोलेसेंट, जो एज ग्रुप है फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 5 years to maybe 14-15 years, these are people who are not the decision makers in the family, but they influence the decisions of their parents, and they essentially sort of demand what they want to eat in a subtle way. But this demand of these adolescents is completely dependent on what is being fed to these children. तो बच्चे जब टेलीविजन देखते हैं या इंटरनेट सर्फ करते हैं या इंस्टाग्राम या कोई भी तरह का सोशल मीडिया का टूल यूज करते हैं, तो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स बच्चों तक पहुंच रहे हैं और फूड्स दैट आर वेरी टेस्टी, वेरी स्नैकी, बट एक्सट्रीमली अनहेल्दी। इसके अलावा आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर, किसी भी बड़े स्टोर में चले जाएं, आप देखेंगे कलरफुल पैकेट्स ऑफ स्नैक्स एंड चिप्स एंड ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस सामने लगे होते हैं, which are very enticing for the children. और because adolescent वो टाइम है जब बच्चों की बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है और हर तरह का न्यूट्रिशन उनको जरूरत है, और उस समय जब वो न्यूट्रिशनिस्ट फूड की जगह इस तरह का फूड चूज करते हैं, तो उनकी हेल्थ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो अडल्टहुड में भी उनके ऊपर कंट्रोल करता है। इसलिए एडोलेसेंट और यंगर एडल्ट्स को बहुत जरूरी है कि हम एजुकेट करें और करंट फूड चॉइसेस उनकी इम्प्रूव करें। आपने अर्बन इंडियन के हेल्थ का जिक्र किया है। अब घर का बना ट्रेडिशनल फूड की जगह रेडी टू ईट और प्रोसेस्ड फूड बीमारी का रिस्क जो है वो जो बढ़ाता है, वो लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर फूड मार्केट बहुत पावरफुल है तो इसे कैसे रोका जाए? ये तो मुझे भी ठीक से नहीं पता,
बस मुझे इतना जरूर पता है कि 2 चीजें की जा सकती है किशोर जी। पहली चीज जो की जा सकती है वो ये कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो रेगुलेटरी पॉलिसीज है, जो कि बच्चों को सही और गलत, जैसे एक सिगरेट के पैकेट पे हमने इतना डिफिकल्ट एक इमेज लगा दिया है कि कोई भी सिगरेट खरीदने से पहले थोड़ा डर जाता है, क्योंकि 70% ऑफ दैट पैकेट इज कवर्ड विद अ वेरी वेरी स्कैरी इमेज, और उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि लोग डरे सिगरेट खरीदने से पहले। ये अलग बात है कि सिगरेट की सेल्स कम नहीं हुई, बट अगर फूड पे भी हम सही तरीके, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग कि ये फूड आपको ट्रांस फैट फ्री है, सॉल्टलेस है, शुगर फ्री है, अगर एक्चुअल चीजें बताएं कि कैसे इसमें इतना नमक है, कैसे ये प्रोसेस्ड है, कैसे ये आपके मेटाबॉलिक पाथवेज को डिस्टर्ब करता है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, ये इंफॉर्मेशन रेगुलेशन को करना पड़ेगा। एफएसएसआई इस बारे में काम कर रही है, बट देयर इज अ लॉट मोर दैट नीड्स टू बी डन। एंड आई थिंक सेकेंड पार्ट जो इसका है वो ये है कि एक हम कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की बात तो करते हैं, बट एक्चुअली जो एजुकेशन होना चाहिए अबाउट फूड इज स्टिल मिसिंग। अभी भी हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दे पाए, क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर उनको सही एजुकेशन हो और इंफॉर्मेशन हो तो वो अपने आप ही बेटर डिसीजंस ले सकते हैं अपने खुद को लेकर। तो आपने जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कह रही थी, एक तो गवर्नमेंट रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट, एंड पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर ग्रुप्स, हर लेवल पे इंफॉर्मेशन का स्प्रेड सही तरीके से होना वो भी बहुत जरूरी है। आपने अभी कहा कि गवर्नमेंट रेगुलेशन होना चाहिए प्रोसेस्ड फूड में, तो और आपने सिगरेट का भी जिक्र किया, तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या सिगरेट में जो वार्निंग पिक्चर देते हैं उससे सिगरेट की बिक्री या खपत कम हुई है? मार्केट तो ऐसा नहीं कहता, मार्केट डेटा। दूसरा, फूड के मामले में आजकल के बच्चे ट्रेडिशनल फूड खाना नहीं चाहते और पेरेंट्स बच्चों के दबाव में रहते हैं, तो इसको सरकार कैसे रेगुलेट कर सकती है? देखिए, क्योंकि फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, जिसको हम बिग फूड कहते हैं, बहुत बड़ा मार्केट हो गया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, तो सरकार को रेगुलेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली हमारे अगले जनरेशन के हेल्थ की बात है ना। वी कैन नॉट हैव अ सिक पॉपुलेशन ग्रोइंग अप जिसका द रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ ओबीज है या थोड़े अनहेल्दी है। दीज चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ वेरी सीरियस क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीजेस, और वो रिस्क इतना हाई है कि जुवेनाइल डायबिटीज, अर्ली ऑनसेट डायबिटीज, अर्ली ऑनसेट हाइपरटेंशन तो हम अभी ही देख रहे हैं, और आगे जाके हम इसके और वर्स फॉर्म्स भी देखेंगे। पीसीओडी जैसी चीजें जो पहले होती ही नहीं थी एक जनरेशन पहले, हैव बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू पुअर लाइफस्टाइल, 70-80% ऑफ विच इज फूड। तो रेगुलेशन तो अगर किसी भी जैसे कि किशोर जी आप कह रहे थे कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी रेगुलेशन नहीं है। आप जितना ही सिविलाइज्ड या प्रोग्रेसिव या एडवांस्ड कंट्री होगा, उतना ही आप देखेंगे फूड इंडस्ट्री उनकी उतनी ही बड़ी है। तो हम लोग अपनी तरफ से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोगों के साथ वर्कशॉप्स कर सकते हैं, उनको पढ़ने को बोल सकते हैं, सही इंफॉर्मेशन गैदर करने को बोल सकते हैं, बट उसके अलावा तो हम ये कम फोर्सेस बहुत पावरफुल है, तो हम शायद कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपने एक और पॉइंट जो बोला कि वो सिगरेट की बिक्री कम नहीं हुई है, वो भी बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज एज यू करेक्टली सेड कि उसका एम ही यही था कि लोग उसको खरीदने से पहले थोड़ा डर जाए, बट आई थिंक वो हुआ नहीं, वो विजुअल इम्पैक्ट उसका हुआ ही नहीं। तो उसको तो शायद वी हैव टू रीथिंक द स्ट्रैटेजी ऑफ इनफैक्ट फूड में तो उल्टा है किशोर जी। Instead of putting the red markers or the red flags on food packets, food companies are putting on more and more enticing health claims. वो क्लेम करते हैं कि हम ट्रांस फैट फ्री है, हम आयरन रिच है, हम फाइबर रिच है, तो ये सारे क्लेम्स वो डालते हैं अपने फूड पैकेट्स पे टू सेल मोर। तो ये इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि स्कूल कॉलेज की कैंटीन में
या किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके कैंटीन में रेडी टू ईट पदार्थों की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए, प्रोसेस फूड पे रोक लगनी चाहिए। हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको पता है, ये आपने सुझाव तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन जिस दिन ये लागू होगा वो ह्यूमन राइट्स वाले एक्टिविस्ट जो है वो खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारे खाने पीने की आजादी पर ये हमला है। कैसे? ये बहुत मुश्किल नहीं है सरकार के लिए? हम खुद नहीं कर सकते ये सब? इंस्टीट्यूट खुद, स्कूल कॉलेज खुद नहीं कर सकता ये? बिल्कुल। आई थिंक एज रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनके बच्चे का एडमिशन सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी में हो गया 12th के बाद। तो 12th के बाद बच्चे छोटे होते हैं, 17-18 साल के बच्चे, आप सिंगापुर बच्चे को भेज रहे हो तो अब आपको बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं, क्या करेगा, कैसे। तो I remember the university replying back and saying we have lot of food at the campus, don't worry about fooding and lodging। और इसमें लिस्ट थी कि कौन कौन से ब्रांड्स उनके पास है। तो जितने भी जंक फूड्स के ब्रांड्स आप सोच सकते हो वो उस लिस्ट में लिस्टेड थे कि डोंट वरी, आपका बच्चा आएगा तो उसके पास खाने के लिए इतने ऑप्शंस हैं, हमारे पास इतने आउटलेट्स हैं। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज एन इंडस्ट्री विच इज टेकिंग इन यंग टैलेंट, how can we feed our children this when we know that this is causing them to become unhealthy? तो ये तो ऑर्गेनाइजेशंस हर लेवल पे क्रूसेडिंग की जरूरत है, चाहे वो घरों में हो, इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो, हर लेवल पे। ऑफिसेज में आप देखिए, पीपल आर, अब तो HR पॉलिसीज हो गई कि जो लोग हेल्दी होते हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको कुछ स्पेशल पॉइंटर्स मिलते हैं, एनुअल हेल्थ चेक्स होते हैं, लोगों की फिटनेस को टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह के मोर एंड मोर इंक्लूसिव थिंग्स विल हैव टू बी डन इंडिविजुअल लेवल्स पे। आपने एक और बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि न्यूट्रिशन एजुकेशन को सिलेबस में स्कूलों में शामिल करना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो सभी इसको पसंद करेंगे। फिर ये क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि किशोर जी, क्या हुआ कि फूड को और डिजीज को हमने उतना क्लोजली रिलेट किया नहीं। ऑल्दो हिपोक्रेटिस हजारों साल बोल के गए थे ईट फूड एज योर मेडिसिन, बट उसको हमने सीरियसली लिया नहीं। तो हम जो खाने को हम उसकी पावर को अभी भी अंडर वैल्यू करते हैं, अंडरमाइन करते हैं। और वो चीज तभी बच्चों में इनकलकेट होगी जब शुरू से उनको पता होगा कि देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन व्हाट दे ईट एंड हाउ हेल्दी दे आर। एंड ये धीरे धीरे हम बचपन से ही बच्चों को जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे ही। तो न्यूट्रिशन एजुकेशन शुड बी अ कंपल्सरी, जैसे फिजिकल एजुकेशन कंपल्सरी हो गया है और गेम्स के पीरियड्स होते हैं, गेम्स के स्पोर्ट्स होते हैं स्कूल में, तो फूड से रिलेटेड भी कॉन्वर्सेशन जरूर होना चाहिए। एक बात और, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद मिस्टर शंकर आपसे बात करेंगे। हम लोगों ने बचपन से अब तक जो एक हमारा ट्रेडिशनल फूड होता है कि सुबह ये नाश्ता करना है, दोपहर में हमें चावल खाना है, चावल दाल खाना है, रात को रोटी खानी है। एक नॉर्थ इंडिया में ये ट्रेडिशनल, खास करके ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वो है, और बाकी जगह भी अपने अपने तरीके से होते हैं। लेकिन जो हमारे बाद का जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके खाने के, उनके मेन्यू में तो चावल रोटी है ही नहीं। तो एक पेरेंट्स को आप बताइए कि एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि उनके मेन्यू में ट्रेडिशनल फूड आए। ये तो आप तो सिर्फ चावल रोटी की बात कर रहे हैं किशोर जी, हम बाकी तो सब कुछ भूल ही गए। हमारे घर में तिल के लड्डू भी बनते थे, कई तरह के अचार बनते थे जो हमारे गट के लिए इतने हेल्दी होते थे, कांजी बनती थी घर में, चटनियां बनती थी जो हर्ब्स और स्पाइसेस का पावर हाउस होती थी। उसके अलावा अगर बच्चों को भूख लगती थी तो अंजीर का लड्डू, काजू बादाम फ्राई करके उसके, ये सब तो हम बिल्कुल ही, रागी, जवार, बाजरा, जो हमारी ट्रेडिशनल एंशिएंट ग्रेन्स है जो हजारों साल से हिंदुस्तानियों ने खाए हैं। और आज भी जैसे मिस्टर शंकर इज देयर, वो जानते हैं कि आप जाएंगे तो केरला में हर आदमी रेड राइस खाता है, हर आदमी अगर आप जाएंगे कर्नाटक तो सब लोग जवार और रागी खाते हैं। बट अब ये जनरेशन है और जो नेक्स्ट जनरेशन जो बड़ी हो रही है
वो बिल्कुल इससे अलग हो गए हैं। और उसका एक मेन रीजन है कि ये फूड्स को हमने अंडरमाइन, हमने अपने जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनको हम नीचे देखते हैं, और जो अमेरिकन इंडस्ट्रियल फूड होता है जो बहुत अच्छी पैकेजिंग में आता है उसको हम देखते हैं कि दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो वो उस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत, ये फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, हर लेवल पे चेंजेस की जरूरत है किशोर जी। थैंक यू मंजरी जी। आपसे मिस्टर शंकर बात करेंगे। ओवर टू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore ji. Thank you so much. Thank you, Manjari. In between, we have a small video on nutrition. We'll play that nutrition and then I'll come back to you. Yes, yes. सब लोग खान पान की बात बहुत कर रहे हैं और आप फाउंडर डायरेक्टर हैं फ्रीडम वेलनेस के, तो वेलनेस भी है, फ्रीडम भी है। आप कुछ अपनी राय दीजिए। सबसे पहले है कि जब हम खाना खाएं, इसका मंत्र बहुत सिंपल है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो अपना एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। अब देखिए कि एटलीस्ट हाफ पार्ट ऑफ द प्लेट हम हमारी सब्जियां खा रहे हैं। दिस कैन बी रॉ वेजिटेबल, कुक्ड वेजिटेबल। एज इंडियंस हम कार्बोहाइड्रेट फूड्स जैसे रोटी चावल बहुत खाते हैं, इसको रिड्यूस करके खाली 1/4 पार्ट में हम डालेंगे और प्रोटीन्स के ऊपर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बाकी हो गए हमारे हेल्दी फैट्स जैसे नट्स है, सीड्स है, ये इनको भरपूर खाइए। और ये सिंपल तरीका है, बहुत बेसिक तरीका है। अपने आप को 3 क्वेश्चंस पूछिए, क्या मैं 400 grams ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खा रहा हूँ? ओके, when I wake up in the morning, do I wish my alarm rang after half an hour, 45 minutes और मेरे को आधा घंटा मिला? अगर कोई सुबह को उठता है और 8-6 घंटे की नींद के बाद भी थका हुआ उठता है तो कुछ ना कुछ आहार में प्रॉब्लम्स है। तो ये 2-3 सिंपल क्वेश्चंस अगर हम पूछेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारे खाने में जो है कमियां हैं। Welcome back, Ms. Panchari. Now, my first question to you is, I think in the intro part, when you read something, I heard the word noodles. Is it right? Please unmute yourself. Hanji, Shankar. Yeah. So, can you describe what do you? Because generally there is a concept that if it is noodles, it must be those, you know, the noodles that we generally have with a ready mix pack, and then have it the maida noodles. So, what's your recommendation? So, आपको पता है, मैं इसको एक दूसरी तरह से जरूर कहना चाहूंगी शंकर जी। हमारी when people go to hospitals to have major surgeries done, let's say a bypass surgery done, you know, they are checked for how strong their teeth are, their dentures are checked. And if their dentures are not the best, the doctors do not okay them for surgeries like knee transplant and bypass, because there is a chance that patients with these surgeries may need ventilator support. And if they don't have strong dentures and jaws, then the ventilator cannot be used effectively. So having healthy teeth is such an important thing. Now, if you see today, young children have a lot of cavities, have poor teeth, use a lot of, when I was growing up, I didn't need braces to keep my teeth aligned, but most children today need braces or some sort of support. The reason it is happening is because we don't eat hard food anymore. We don't eat things like chana or sugarcane or, you know, hard things which are natural in their form. Most of the things that we eat now are slurpy, made with refined flour, are things that are easy and soft on our palate.
because of which the jaws don't need to work. The jaws don't work and the teeth don't develop properly. So just eating noodles over eating a nice lentil or a sprout is putting you at a high risk for having poor dental health also. Not just the fact that you're having maida, which is very high in sugar and carbs, and the noodles have a lot of chemicals and sodium added to it. So when you choose between eating unhealthy over healthy, there are a lot of health implications of those. And kai baar logo ko people think that one serving, a little bit, once in a while, but normally it becomes a pattern. I mean, there are a lot of people who literally eat noodles for meals. With some, and when you ask them what you're eating, they say that there are a lot of vegetables in that. But that's not how you should be eating vegetables. Yes. So. Yeah. Now you were actually speaking on an important topic of chewing. Now, this art of chewing has now almost vanished because we don't have time or table. We don't sit together and eat. At least when we were having a family, get together, and we used to talk, and so we used to chew in between. Now, what do you say would be an ideal chewing and how to chew? So we've heard this from our parents and grandparents, chew your bite, every morsel 32 times. That may be difficult to do. Actually, ideally, we should be chewing our food to liquid before we actually allow it to enter our body. And there is a physiology which supports this chewing behavior. The physiology is that if I don't chew my food well and I eat half-chewed food, then the saliva also enters my stomach. And that saliva is alkaline pH, and that pH disrupts the acidity in the stomach, causing a cascade of problems in the further digestion of the food. So just not chewing food enough can cause putrefaction of food, can cause acidity, reflux, bloating, so many conditions. So chewing is very important. That's why we always say mindful eating and eating in a setting. As you correctly said, Mr. Shankar, that, a lot of people are eating on the go, in the car, while working, while seeing television. So food is just one part of, it's not really the priority. It's not really meal time. And it will only happen when we organize our meal times and eat in peace, that we learn to chew our food. And you spoke about the red rice in Kerala, but I should also be informing you that many people, especially the younger generation, are started shifting to white rice because that's more attractive, which is very unfortunate. But my basic question is, most of the people eat is white rice. So is there any health benefit, or are they just having it? There is no health benefit at all. So to put it simply, a bowl of white rice is like a bowl of sugar for your body. It's the same thing. It's just that it looks like rice, but it's going to immediately break down into sugar and cause the same problems that eating a few teaspoons of sugar would cause you. It hardly has any nutritional benefit, hardly has any micronutrients or antioxidants in it. Also, most of this white rice is refined by using arsenic. So there's a high load of toxic substances also in this white basmati. So obviously, it's the poor choice to make in many ways. And what's your opinion on ready to cook or ready to eat types of food, where the chapatis are half baked, you have idli batters, and things that you just bring to the shelf and prepare your breakfast or lunch in just a few minutes. Are these good? It's a bit like telling a kid that you can qualify your IIT exam by reading the guidebooks, That's not how it works. There is no quick fix to healthy eating. And everything that we buy ready to eat, I'm not saying that people who are making it are not putting in the thought, but the thought is still not translating into nutritious food. Everything, as a thumb rule, anything that is processed or packaged or is ready to eat or comes out from a box, tin can, Tetra Pak, you can suspiciously take it to be unhealthy. Most of the time that should be your thumb rule. And there is very, very few exceptions to that rule. Very few that, I know what the market has. So. And we spoke about, especially Kishore asked about this junk food, about ready to eat, junk food, which is very unhealthy. But is there anything called a healthy pizza or a healthy burger?
Yeah, some people think so. They sometimes replace the white flour with a wheat crust. Maybe that can do. Nowadays, people are making the crust from vegetables instead of like grated cauliflower instead of taking maida. So those changes are better. I mean, at least there is thought to replace the poor flour with vegetables. You don't use pre-made sauces, which are heavy on sugar and additives and chemicals, but use fresh vegetables, add good quality cheese. So that is a better version of the pizza. Of course, I mean, for smaller children, the problem is it takes as much effort as making sabzi roti or making, a nice, good broth at home. So if you want to eat a healthier pizza, it's not available in the store. You'll have to put it together yourself. And that's a lot of effort. And I think now North India is slowly moving towards having raw mangoes. The season is just starting in states like Uttar Pradesh and other places, whereas the South has already finished the season. So you just spoke about raw mango juice. So can you just tell us how our viewers, how it is prepared? Whatever, nature has its own bounty. So whatever seasonal things like we have mint and raw mango and falsa, jamun will soon be in season, which is the Indian blackberry. All these things were actually made by nature to counter this heat, So having them not only improves our hydration and also satiates our thirst and our requirement for electrolytes, it also adds on a lot of nutrition in the form of minerals and vitamins and something called antioxidants, Shankarji, which is never found in a packaged food, which are live things that we call it the live part of food. When you eat real food, you get some life from it. When you eat packaged food, there is no life to that food. So when we're eating raw mangoes and mint and all the seasonal berries and all the seasonal produce, we're eating a lot of life, and that life adds on to our own health and our own life. And the other bit is that they're easily available, they're cheap, and they are super tasty and easy to make. It's just that we need to start going back to them instead of looking for convenience food. Now, my basic question was, suppose a viewer wants to make this raw mango juice. What is the process? It's very simple. You just take a couple of mangoes, give them a little boil in the water in a little saucepan. It becomes tender. Strain it and just take out the pulp. Add whatever herbs you like. Typically, some coriander, some mint, which you can grind on a stone. Some green chilies and some black pepper, some cumin seeds, some black salt, and some ice, and you have very, very refreshing aam padare. You just spoke of chilies. There are a couple of studies which said that chili is good for the heart. Capsicum, chili. Is it true? Chilies, ginger, garlic are extremely good for multiple things. Chilies are especially good for your gut, not just for your heart, because the capsicum, the type of anti-inflammatory components that they have reduce inflammation in our gut. And similarly, they reduce inflammation in your coronary arteries. So they're better for your heart also. And so all these things which have bitterness to it, they are actually very good for our body. And you see, in India, we used to eat a lot of spice, and the West would laugh at the fact that we were eating a lot of spices. But these spices are anti-inflammatory. They reduce the swelling or the inflammation in the coronary arteries. They reduce cancer, tumors. They kill tumors. They reduce inflammation in the gut. So chilies in many forms, peppers, hot peppers, bell peppers, the green chilies, the red chilies, all of them are beneficial to us. Black pepper is the idea. Actually, speaking in Kerala, we never used to use chilies. It was always based on black pepper because black pepper is available in plenty. And my next question is, it is normally said that you should eat what your grandparents ate. But there is a difference there. The grandparents ate and worked. But here, if we start eating like what our grandparents ate and we don't work, that is a small problem. So what do you have to comment on that? So there are two ways of looking at that statement. One connotation is my grandparents ate aloo paratha for breakfast and 4 of them with a big dollop of butter, so I should also eat that.
But that was applicable when they were farming, when they went to the farm and did that, or they were fishing, not when they worked in a corporate set and set up and sat in front of a laptop. So therefore, you can't continue to eat that. What essentially this statement means in its right form is that you eat foods which are native, which have not been introduced onto your table by the industry. Types of fats that were traditional, type of grains that were traditional, type of fruits and vegetables that were more traditional. Pomegranate, is the ancient fruit, most ancient fruit that we know of. So that is what it essentially means. We also have another statement where we say that, take your grandmother to the aisle and the departmental store. If she doesn't recognize a food, don't buy it. Everything that she recognizes only should be buy. So it has a positive connotation. The problem is, as you correctly said, that people don't work, but want to eat the same portion of food. So the portions have to be very, very less, but the quality and the type of food should be what they will. The unfortunate part is that we don't have our grandparents staying with us. And second is the grandparents are, even if they're willing, they're not taken to the supermarkets. That's a major problem. You spoke about paratha and a lot of butter. Now, what's your view on ghee? So the whole world is going gaga over ghee, and not for the wrong reason. Good quality ghee is the best fat, besides a few more like coconut oil, that is known to human beings. And there's been extensive research on that, Mr. Shankar. For example, ghee contains something called short-chain fatty acids like butyrates. And these types of fats are the food for a healthy bacteria. So just eating good ghee can restore gut health. And that's why our ancestors had bowls of ghee with their food. The problem becomes when you combine ghee with sugar. The issue is we are now combining ghee and eating it as motichur ka laddu or ghee with too much of sugar. That's where it goes wrong. On its own, ghee is good, but you can't combine it with carbohydrates and sugar too much. I see. And what exactly do you mean by desi ghee? It's one you prepare at home? There's a traditional way of making Indian ghee, which is from the Indian cow and not the hybridized, animals that are there. We call it the A2 cow ghee, which is the ghee cow, the local Indian cow. And that milk is basically boiled, the cream is collected, and then it is set as curds by adding some curds. And then you sort of, mechanically, either using a grinder or a mechanical blender, blend the curd until it separates into butter and whey. And then the butter is then just heated for some time and it converts into ghee. The leftover buttermilk is also very healthy. So it can be used to make chas at home, or it can be used to, add to your curries to make them more flavorful. Apart from this junk food era, we are also moving into a very refined era where everything, excluding our thoughts, are refined. In the sense that we have refined oils, we have refined this, refined that. So how, especially in oils, what's your concept of refined oils? If you ask me, I would say everything that is oil that industry put on your table, you should not be having at all. Any form of, all the sunflower, canola, rice bran, peanut, soya bean, all that is just very poor quality fats. They are known as the most common inflammatory things in our diet, actually, besides sugar and carbs. So the best form of fats are a traditional fat. So if I'm from North India, maybe ghee and cold pressed mustard oil. If I'm from South, maybe coconut oil and tilka tel, which is sesame oil, or peanut oil a little bit if that was traditionally there. So, or if you're from another part of the world where there are other forms of oils like olives or avocados, then that is type of fat you should be eating. And definitely not refined oil. Nobody requires even a teaspoon of refined oil in their entire life. But they are cheap, they're easy to use, and they're easily available. So they have become the order of the day. Yeah. Now you spoke about having breakfast, having lunch with a lot of fruits and vegetables and all.
But would this be applicable to growing children? Because they need some extra energy and they need. So what did you speak about them? Kids, of course, need a lot of food, but good food. I mean, you don't have to restrict food for children, but you definitely have to restrict the cookies and the desserts and the snacks and the chips. What parents should be giving them is wholesome vegetables and fruits, and besides that, nuts and seeds, and the regular homemade food are whole dals and unpolished rice and unpolished grains. This is what children need. And now we do a lot of workshops with children, smaller children. And it's really heartening to see that if you engage them with food, they are the ones who will always choose the better food. If they cut their own salad, they'll definitely eat it. If they chop their own tomato, they'll eat the tomato. And during the COVID era, we had a lot of these self-made chefs who came on and said, this is good for you, this is ideal for you, kitchen remedies, this, that, and all. Of course, this generation of chefs have vanished now that the COVID has also gone. But is there something called a post-COVID diet, especially since we are speaking about long COVID and how it will last for 6 months and more, if not? So are there some special diets for this post-COVID patients? So there are clinical settings where we meet people who have long COVID. So all of them have different symptoms. Some are suffering from tachycardia or ventricular hypertrophy. So if they have a clinic condition which is cardiac in nature, then you look at it that way. But generally for people who become weaker, who feel fatigued all the time, who feel tired because of the infection causing them that, then we're asking them to eat more antioxidants, more vitamins and minerals, ensure that they vitamin D3, B12, magnesium, zinc, selenium, iodine, all these folic acid, all these nutrients are taken in enough. And of course, other things like, there are a lot of powerful foods, probiotics, prebiotics, a lot of other things that we are requesting them to add on to their diet, so that they can regain the health that they have lost thanks to the infection. These prebiotic and postbiotic things that are available in the market, are they good? Sadly, nothing that is in the market is good. It may be okay once in a while, but if you want to make it good, then it's good to do it yourself. Make it at home. Yes. Or at least there are some good sources. If you're really so keen, then you have to find, there are people now who actually do this at home as a part, this is their job. Like there are people who are making fermented foods at home. So then you have to identify those people and take it from them, instead of ready to eat things. And, in my big growing markets like Delhi and in Bengaluru also, where I know about it, there's a growing generation selling cow's milk directly from the cow. Which is of course costly. If the processed milk is about 40, this is about 60 rupees. So what do you have to say about this particular type of milk? That is the right thing to do, Mr. Shankar, because one, this is cow milk. This is not homogenized milk where you've added all the milk and mixed together and taken out the goodness of the milk. This is real milk. Also, another problem with milk that is commercially available is that it's pasteurized, which is not how you want milk to be. You want milk to be raw because then it contains the enzymes and the digestive things that can break down its own sugar and protein. When we have pasteurized milk, we don't get the good bacteria from the milk. That's why everybody becomes lactose and casein intolerant. So definitely but with commercialization, how much of this raw milk is actually, raw? Yeah. Thank you. It was wonderful talking to you, Manjari. I think I was very happy to see that your books were available, I think in Delhi, D2 at the airport, where I saw you with a couple of people there, showing the book. And I'm sure that the book will start gaining popularity very soon. Thank you very much for telling us all the important points of nutrition. And I'll be looking forward for your book in the future. Thank you very much and all the best. Good day. Thank you so much. Thank you. Over to you, Kishore. मंजरी जी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आम का सीजन है और जो डायबिटिक हैं हर बार ये बहस छिड़ती है उनमें कि आम खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। कल मैं एक डॉक्टर का वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि आम में जो है फ्रक्टोज होता है जो कि
शुगर नहीं बढ़ाता शुगर लेवल, तो आम खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसको हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म कर दीजिए कि आम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए टाइप 2 डायबिटिक को। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है। जी किशोर जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। वो डॉक्टर, हर फ्रूट में जो शुगर होती है वो अलग होती है, वो ग्लूकोज नहीं होती, फ्रुक्टोज, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। मॉलिक्यूल सेम है C6H12O6, सिर्फ उसमें कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप बदल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप फ्रुक्टोज खाते हो तभी भी इंसुलिन उसी तरह स्पाइक होता है। हमारा लिवर, पैंक्रियाज फिर भी उतना ही इंसुलिन बनाता है जितना कि शुगर खाने पे बनाता है। तो जो डायबिटिक्स हैं जिनमें ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इंसुलिन का बिहेवियर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उनके लिए आम उतना अच्छा नहीं है। तो व्हाट वी रिक्वेस्ट इज कि अगर आपको बहुत पसंद है आम, तो आप बाकी कार्ब्स अपने कम कर दे अगर आपको आम खाना है, और आम की 1, 2, 3 स्लाइसेस खाने के इमीडिएटली बाद खाएं। अपने आप में ना खाएं कि शुगर एकदम से स्पाइक हो, पर अगर आप फैट और बाकी खाने के साथ खाएंगे तो वो उस खाने के साथ वो शुगर को बिल्कुल से, इंसुलिन को बढ़ाएगा नहीं। क्योंकि डायबिटिक्स में जितना इंसुलिन स्पाइक्स होती है उतनी डायबिटीज बिगड़ती जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा आम ना खाएं, बाकी कार्ब्स कम कर दें, और आम को खाने के इमीडिएटली बाद, जैसे पहले लोग खाते थे, खाना खाने के बाद आम खाते थे, वैसे। थैंक यू मंजरी जी। Thank you very much, Manjari. I think it is wonderful having you, especially the question on mangoes is good because the mango season is coming up now very shortly. And I think this is a nice advice that you have given. And with this, we end our show, and thank you very much. And hopefully next time we'll have another important topic. Of course, you have covered the entire gamut of the things on nutrition, and we hope to see you very soon. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Now, thank you for all the speakers, and we'll now move on to our next show, which would be next Sunday, which would be another special show, which would be called Get Moving for Health. This is also a very special show. I think please do get tuned because you will find a lot of novelty, but I'm not going to reveal what that novelty is. You'll soon you'll get mailers about this particular novelty, but it is going to be a live show from Delhi. Thank you and have a nice day ahead.